नमस्कार, सत श्री अकाल, a very warm welcome everyone. एक बार फिर आप सबका तहे दिल स्वागत है. We will continue the back to basics session tonight or today as well. First of all, आज बहुत सारे festivals हैं इंडिया में. तो आप सबको बहुत सारे festivals की एक साथ शुभकामनाएं. आज क्या क्या है देखा जाए. Today is the 13th. And there are about 10 different festivals. तो पूर्णिमा की डेट है, अमावस्या है, एकादशी है, April 13th. And ये जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं. यस, आप सबको जो आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आप सबको बहुत ज़्यादा बधाई, and of course congratulations and happy Gudi Padwa. And I don't know who this Siddharth Pitani is. Hi Siddharth Pitani. Hello Satish ji, Sonali, Satish, Ganga ji, Gautam, Prashant. Let me just flash this message. Yes, Baisakhi, April 13th, first Navratra, Ugadi, Ramzan, Hindu New Year, April 13th, and सबको बहुत सारी जैसे कि पल्लवी बोल रही हैं, लख लख बधाइयाँ सबको. Today is not Ekadashi. Okay. All right. That's incorrect information. तो ठीक है, ये जो information प्रशांत जी फ्लैश कर रहे हैं, आप सबको सारे festivals की बहुत बहुत मुबारक. All right. So yes, जैसे कि मैंने कहा, let's continue talking about the basics. उसके अलावा obviously we will touch upon certain other things. We will definitely talk a lot about what has happened in the last few days. Of course, along with what has happened since June 8th specifically. June 8 से June 14th के बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज हुई हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं. So we will definitely continue talking about it. तो आज हम बात कर रहे हैं about इम्तियाज खत्री. एक बार फिर से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है, क्यों, उसके बारे में. ऑफ लेट बिल्कुल ही कंप्लीट साइलेंस है. There is no information around Imtiaz Khatri. He has not been seen around. We will talk about it as well. So join. Yes. So as soon as Dhruv is here, we will have him. We will have others also join. Let me make sure I ping all the URLs so that people can join. And आप में से भी कोई जो join करना चाहता है, थोड़ी देर में आप सबको भी लिंक मैं जरूर दूंगा, so that you guys can also speak up. Now, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुशांत मर्डर केस में अगर हम इम्तियाज खत्री का रोल देखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक इम्तियाज खत्री का एक्चुअली गुरु रंधावा का एक इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने शेयर किया, जहां पर इम्तियाज खत्री इस पर रिप्लाई कर रहे हैं. ये 14th जून का इंस्टाग्राम पोस्ट है जो कि गुरु रंधावा ने पोस्ट किया है विद अ पिक्चर ऑफ सुशांत एंड इम्तियाज खत्री टुगेदर, द थ्री ऑफ देम टुगेदर इन अ पिक्चर, जिसके साथ उन्होंने एक कमेंट भी लिखा है कि ही इज शॉक्ड एंड सैड दैट सुशांत इज नो मोर. उसके ऊपर इम्तियाज खत्री भी लिख रहे हैं शॉक्ड, और मैं वहां देख रहा था बहुत सारे लोग उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं. उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन देयर इज नो रिस्पॉन्स. या तो मैसेजेस डिलीट हो गए या बहुत सारी चीजें have been taken care of for Imtiaz Khatri. Imtiaz Khatri का अपना खुद का account has become private, so anybody who is already connected with him would be able to see him, but जो लोग उनके साथ connected नहीं थे, obviously they won't know. Now let's talk about who is Imtiaz Khatri. Imtiaz Khatri के बारे में जितनी information जो हम थोड़ा पढ़ पाए, निकाल पाए, he is the second son actually of a builder in Mumbai. और ये ऐसे बिल्डर हैं जो who is known
for not only the buildings or yeah ghar build yeah property build yeah uh, contract government contracts lene ke liye. They're also known for doing a lot of these drug parties and spreading drugs or selling drugs. तो ये दो भाई हैं इरफान एज वेल एज इम्तियाज. दोनों भाइयों का दे आर नोन काइंड ऑफ नोटोरियस बंच जिन्हें कहा जाता है. ये दोनों वैसे हैं. दे हैव they had a lifestyle. Abhi to lifestyle badal gaya hai for the last at least 8-9 months, but they were known to have a lavish lifestyle. uh, जहां पर इम्तियाज हो या जहां पर इरफान हो, दोनों के लिए कहा जाता था there'll always be a lot of drugs, there'll always be a lot of uh, celebrities around them, and there will always be a lot of uh, uh, drinks also involved. He's a known drunkard as well. आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो आज तो स्पेशली बहुत ज्यादा दोबारा से पिकअप हुआ है, बट दिस वाज अ वीडियो व्हिच केम couple of years back. 2017 का बर्थडे सेलिब्रेशन है सुशांत का, जिसके बारे में उस टाइम पे शायद हम लोगों ने उस नजरिए से नहीं देखा, उस तरीके से हमने उसके बारे में बात नहीं करी. बट आफ्टर सुशांत वाज मर्डर्ड, तब हमने जाके देखा कि द वे ये उसको एस्कॉर्ट करके गाड़ी के अंदर पुश कर रहे हैं. इम्तियाज खत्री वाज पुशिंग, लिटरली पुशिंग सुशांत सिंह राजपूत इनटू द कार, एंड वी कुड सी अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट दिख रहा था सुशांत के मुंह पे. तो अगर इम्तियाज खत्री के बारे में बात की जाए, ही इज नॉट अ वेरी लाइक शार्प गाय. अपने आप को ये एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन कहते हैं. बॉम्बे में पैदा हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स ही हैज बीन also associated with not only his real estate या वो जो बिल्डिंग वाला बिजनेस है इनका, उसके अलावा इन्होंने एक कंपनी खोली थी which was called VVIP, यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी थी, उसके बारे में जितना हमने इन्वेस्टिगेट किया, दे वर kind of known to get contracts from the government officials as well, especially Mumbai and Maharashtra में बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट बिल्डअप या बड़े बड़े ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जाता था. और इन्होंने 3-4 डिफरेंट तरह की ऐसी कंपनीज खोली थी डिफरेंट नाम्स के साथ. बट द चेन ऑफ दीज डिफरेंट कंपनीज had a parent company which was called INL Infrastructure. उसके अंदर इन्होंने, और आज की डेट में अगर आप इनको सर्च करने जाए, even their website is gone. It is nowhere to be found. And सुनने में ये आया था कि 2009 से 2013 तक they were able to procure a lot of contracts and make a lot of money, of course. 2013 के बाद इन्होंने, for whatever reasons, all that infrastructure business was kind of sidelined. And the bigger thing that started off was about drug peddling, and then he also started off a couple of like non-profits or NGOs to cover up certain things. But at the same time, he also ventured into the entertainment industry, and that's why one of the reasons why you would have seen him with a lot of stars, movie stars, चाहे जैकी श्रॉफ से लेकर शाहरुख खान से लेके अमिताभ बच्चन से लेके सुष्मिता सेन. सुष्मिता सेन की बात करें, he was rumored to be dating सुष्मिता सेन. ऐसी बात भी आई थी. जब इनसे पूछा गया था एक बार, तो उन्होंने बड़ी स्मार्टली उसका जवाब दिया था कि she is very very like articulate, she is very smart, so that's why you really want them, like people like Sushmita, to be your friends or buddies. Other than that, I'm not. And ऑफ लेट बहुत रिसेंटली अभी बात हुई थी जैकलीन फर्नांडिस के साथ भी इनका, एंड देन देयर वर मेनी मोर. सो ऐसा नहीं है कि ये एक दो एक्ट्रेसेस के साथ ही, देयर वर मेनी who were associated with Imtiaz Khatri. Through his company VVIP Universal Entertainment, he has produced a couple of movies as well. कुछ Marathi में है, कुछ हिंदी में है, and he's done that from, and the notion that he was
trying to portray through this VVIP, Universal Entertainment Company, was that this is for the newer talent, people who are not able to find their way or make a headway in Bollywood. This company would be the one. Um, and he also does other activities. कुछ इनकी एक्टिविटीज जो बहुत लाइमलाइट में आई हैं, which the first of it is uh, his friendship with certain people in the industry. Uh, छुपी हुई बात नहीं है, Suraj Pancholi and he are like the best of buddies, and so is Guru Randhawa. So ये तीन चार लोग हैं जिनका एक बहुत क्लोज नेट सर्कल है. गुरु रंधावा के साथ तो इनका कुछ ऐसा प्यार है या ऐसा रिलेशन है कि he has gone with Guru Randhawa on some of his personal trips to Punjab, met his family and stayed with them, and बहुत close याराना दिखा है between Guru Randhawa and Imtiaz Khatri. And we've all seen how come एकदम से गुरु रंधावा का वो जो राइस, जिसे meteoric राइस कहा जाता है, वो कैसे हुआ. So now we can see that. He also does certain other businesses, like I was saying. Businesses कहें या एक जैसे ड्रामा कहें या जो भी कहें, इसको कवर अप कहें, of organizing these football and cricket matches. और उसके अंदर से कहते हैं कि जो फंड रेज होते हैं, उन फंड्स को हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए या वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स उनके लिए यूज करते हैं. तो इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी थी आईएन के, उसी के नाम पे ये वो एक कंपनी चलाते हैं या एक क्रिकेट टूर्नामेंट चलाते हैं जिसको ये आईएन के cricket blast tournament बोलते हैं, जहां पर he invites all the cricket stars, I mean not the cricket stars, the movie stars, and friendly matches करते हैं, invite करते हैं लोगों को, donation लेते हैं, and then as per them, I was not able to find more details around this particular organization, और ये funds कहाँ जा रहे हैं. We will do that maybe in next few months, but he is known for these. और आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर सूरज पंचोली is standing and talking about all these events that happen. Same thing कई बार टाइगर श्रॉफ का भी देखा है हमने. गुरु रंधावा तो obviously he's like connected to him on with a hip, so these are like best of buddies. And then he's also very notoriously connected to a very very shady man, जिसके बारे में हम एक सेशन करें तो कम होगा. We will have to dig deep and get more concrete evidences, because there is one man in this whole scenario जिसका बहुत सारी ऐसी engagements में रोल है, and he is also connected, very well connected, with Imtiaz Khatri, who is none other than Manish Malhotra. मनीष मल्होत्रा के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है. एंड ही हैपेंस टू बी अ क्लोज बडी ऑफ इम्तियाज खत्री एज वेल. नाउ अगर आप इसको देखें, राइट फ्रॉम दिव्या भारती टू श्रीदेवी टू सुशांत सिंह राजपूत टू एनीबडी एल्स, जिया खान, all of them have this common connection. The common kind of thread between all of them has to do something with मनीष मल्होत्रा एंड इम्तियाज खत्री. अब इम्तियाज खत्री की एक और भी फ्रेंडशिप है विच इज वेल नोन. ओके, लेट मी चेक. सिद्धार्थ पठानी क्या कर रहे हैं आप? ब्लॉक फ्रॉम वर्ल्ड एसएसआर. ओके. Okay, all right. Sorry, guys. I will make sure that some of the moderators are there and they will take care of it in future. But unfortunately, I was just in my thought process. So, anyways, so Dharth Patani has been blocked for now. And yes, thank you so much. Namaste, Raish bhai. Namaste, everyone. कैसे हैं आप सब? Yes, you picked up the right point. I think that is one of the points that we really want to kind of emphasize on. हर कोई हर जगह कोई ना कोई connection है.
गुरु रंधावा इज सच अ ग्रेट फ्रेंड. अगर आपने एक वो न्यूज सुनी होगी ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन, गुरु रंधावा को भी अरेस्ट किया गया था, उनको फॉर ब्रेकिंग द कोविड रूल्स. ये सोचें कि क्यों क्यों वो बाहर थे, किसके साथ पार्टी पे थे, और कैसे उनको क्यों पकड़ा गया था. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर shady about him. Now let me connect. How and what has he to do with सुशांत सिंह राजपूत? uh, अगर आपको याद होगा, एक ऐसी इंसिडेंट हुआ था जहां पर सलमान खान को भी इन्वॉल्व किया गया था. देयर वाज अ फाइट बिटवीन सूरज पंचोली एंड सुशांत सिंह राजपूत. बोथ ऑफ देम हैड अ टिफ, ऑफलाइन टिफ कहें या उसको जो भी कहें. दे वर discord between the two of them. उसके बाद सलमान खान की इन्वॉल्वमेंट हुई, एंड लुक्स लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ जेलसी बिटवीन द टू, स्पेशली फ्रॉम सूरज पंचोली, बिकॉज सबसे बड़ा जो इन सबको झटका लगा था was the star rise of Sushant Singh Rajput, especially after Dhoni movie, and they could not see that kind of rise for Sushant, and that's what happened. Okay, looks like he is back. So let me just do this. Yes, that's what the thing is. Uh, right. श्रीदेवी एंड ऑफ कोर्स जिया खान के अंदर भी सुनने को आया है कि ही हैज बीन इन द बैकग्राउंड. सो अगर हम बात करें फिर से सिद्धार्थ पिठानी की नहीं, अगर हम बात करें इम्तियाज खत्री की, one of the narratives, one of the theories that have been going out is 13th को सुशांत के घर पे देयर वाज दिस काइंड ऑफ गेट टुगेदर तो नहीं, ये लोग सब लोग इकट्ठे वहां होने के लिए आए टू टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स रिलेटेड टू 8th जून, जो कि दिशा के साथ जो हुआ, जो दिशा के साथ जिन लोगों ने किया, उनमें से एक सबसेट planned this activity to come and speak to Sushant at his home on the 13th evening. उनमें से एक नाम बड़ा एविडेंटली इम्तियाज खत्री का आ रहा है. इम्तियाज के बारे में बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया, नॉट ओनली डज ही हैव connections in the Bollywood industry, he has a very strong connection with the politicians as well. One of his good friends is AU Aditya Thackeray, and uh, now the point I'm trying to kind of make, and I love people to join as well, especially Yash, if you are watching, it would be great. We would love to see uh, how we can connect those different pieces of the puzzle. 13th ko supposedly, these people went to meet Sushant to maybe confront, to maybe talk, to maybe discuss certain things. There was somebody in that group or that gang jo gaya tha, who knew how to operate a stun gun. स्टन गन के बारे में भी बहुत एक डिटेल्ड डिस्कशंस हुए थे इन द पास्ट, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एवरीबडी स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट इट. देन पीपल also talked about that mark, the neck का जो mark था उसके बारे में. Now, one of the theories, one of the assumptions I would say that is floating around, that there were these 6-7 people who went there, along with the hopefully it is the right assumption that the politician, because there was somebody who knew how to operate the stun gun. और वो जो स्टन गन से जो मार्क हुआ सुशांत के नेक पे, अगर उसको थोड़ा डिटेल में रिसर्च किया जाए, it was definitely from close proximity. It was not somebody who shot from a distance. It looks like it is from a closer proximity, somebody who was maybe closer. Now, if I have to visualize this, and again, this is my personal theory and my personal way of looking at it, it looks like there were a couple of people who were trying to overpower Sushant. Uh,
एंड वी ऑल नो सुशांत की अगर हमने वो देखी है जिस तरह से वो एक्सरसाइज करते थे, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हिज बॉडी, द स्ट्रेंथ ही हैड, he was not someone who could have been easily handled by one or two guys. He could definitely overpower one or two people or well built men easily. He was strong, he was definitely strong, but I'm sure he was overwhelmed if there were more than three people, pouncing on him, maybe hitting him, maybe overpowering him. तो अगर उसको विजुलाइज किया जाए और अगर इनको पजल्स को, डिफरेंट डिफरेंट पीसेस ऑफ द पजल को कनेक्ट, जॉइन किया जाए, it's quite possible that there were people who were holding his hand, there were people who were holding his feet, and then there was somebody who used a stun gun and kind of literally make him numb, totally make him go out. I see here Freeze as well. Let me take him on the screen as well with me, and then we could start talking about this. Hello, Freeze. How are you? Hi, can you hear me? Hi, Yes. hi. What's up? Hope you're doing well. So yes, we will continue to talk about Imtiaz, but also this has to, there is definitely a connection between how this stun gun, or whatever this particular device was used, which made a mark, like a burn mark on his neck, on Sushant's neck. Uh, that was definitely by a device like a stun gun. It cannot be a mark by hanging him or pushing his a cloth around his neck. So that was definitely not the case. Now, if we talk about the stun gun, looking at the mark, and I saw you also post certain pictures, and you also did a little bit of research. Would love to hear from your perspective as well. What do you uh, think about that, the stun gun or the taser, as people are saying? Yeah, I'll just make it fast. I was in Bahrain for a while, and Bahrain has the American naval base of the Middle East. Uh-huh. Okay? Because the Aramco is there. I don't know how many people are aware and they know what's Aramco. So the oil which has been taken to America is from Aramco, this company. So the American naval base is there, and because the naval base, their biggest fleet and their ship, uh, uh, the aircraft carriers, everything is stationed over there. And so I was in a nightclub business, so obviously a lot of, and I was in this place called Jufair. So Jufair is like the poshest place, and all the Americans are living there. And my nightclub was there, so obviously I met a lot of Americans who work at the base. It's called the base, and that's how I became friends with a lot of Navy SEALs. Now, these Navy SEALs are really highly trained people. Okay, Yeah. one of the top guys in the world, in fact, Navy SEALs of the American Naval Force. So I've got these very close friends who are in America, and I, in this recent weeks, I shared pictures. I shared pictures. I shared a lot of pictures of Sushant's neck and his entire body and the room, all the stuff. And after just the next day, I mean, forget the next day. One of them, his name is Jimmy James Guard. Jimmy just looked at it and he was like, "Those are taser or stun gun marks. Now, which one? The two black dots, okay, which are there. So these are like receptors. So they're like two poles, and current flows between that. So they stick it to your neck, and you can stun somebody, and the person goes down straight away. I mean, straight away goes down. Then I shared the entire case with him. I was speaking to them for hours and hours and hours, and I explained to them. So this is again to everybody. This is a theory. It's an analogy. Of course, none of us know what is on the ground, but this is what they told me. First of all, when they saw the picture, they were like, something doesn't seem to be right. The entire body that's laying on the bed. Hmm. So even they noticed the kind of support that has been given to Sushant, okay, at multiple places below his leg. So they were like, something doesn't seems to be right. Uh, he sat. He even cross-checked with some of his. And by the way, Sushant's case is quite
in the news over there also, because they know something has Okay. happened and Bollywood has taken a hit. Okay, they're like, yeah, yeah, we heard about something. There's this murder mystery, blah 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 blah. So when he also cross-checked with some of his friends, they came back and they said it looks like to them that Sushant was first hit by a, because he has anybody seen his body from behind, as in his back? So we've not seen that. Okay. So he told me that to them it seems like somebody from a very close range stunned him. So these are stun guns with two darts flying out from the gun. Okay. And the new age stun guns which are there, so the two dart flies off, and you will not believe. I'm not saying you in second or split seven. It just hits you and you katak, you go down. And you go down on your knee. Yeah. In many cases, the knees also break the moment, because you're suddenly katak, you just fall down on your knee. Okay? You will fall down on your knee and you'll fall flat, straight flat on your face. Okay? So they're saying to them, it seems like somebody shot them, and this is done by many of these guys if they try to uh, take over a section they're trying to get in. Yeah, something. Now this comes second. What I'm trying to talk about is the first one, the one with the dart. So according, so as per them, somebody stunned him Yeah. from behind. He falls down, and then somebody is holding, because he's got no strength for the next 30 minutes. Now these new dart stun guns which are there, they also have a switch on it, because the darts is stuck to your uh, the dart is stuck to your body, and that's, and the stun depending on the person, and this gives, by the way, 50,000 volts of current that flows. He'll be off, or he'll be passed out for at least 30 seconds to 1 minute. Okay? Yeah. The moment the person starts coming back, there is a switch on the gun, and you press the gun again, and the current flows back into. So you don't have to stun it again. It's like stuck to your body, and the number of times you want, you can keep him down. Okay, so no problem with that. Yeah. So according to them, he's been stunned at the back. He falls down. He falls flat. Somebody holds him, and they go to his neck next. Okay, they go to his neck. They have stunned again with the taser, the one with the two, the one that you showed me just now. Hmm. And after that, somebody has sat on his back, because he's fallen down, face down. Okay. Now, in how fast speed or how they have it's done, nobody knows. And somebody has sat on his back, and now the strangulation mark. When they saw the strangulation mark, they were like, please, this is a strangulation mark done by, not like I told him. So there is a theory going on that he had a dog, so a dog leash or a dog neck belt, which is of leather. They said no, freeze. This is not leather. Leather will not make a serious half-inch running mark like that. A constant smooth running mark. He said it has to be a very thin metal. So I was like, metal? He said, yes. In the there are many cases in the underworld, or people what they use. There's a thing called the aluminum splints. Anybody can Google and see that. So what is it? Basically, it's a thin, very flexible aluminum sheet which is covered with fabric. Now this, it comes in long length. It is being used for bone straightening. Very easily you get it. I have posted those pictures also, if you could show people. So somebody has sat on his back and pulled it, and strangulated him. Because imagine if I had to be sleeping on my back, if I was sleeping on my back, and somebody tries to strangulate me, because that person is not behind me, the neck mark will go upside. If you know what I'm saying, it will go upside. Okay, if anybody can see. But this is not upside, this is straight, it is going straight.
So it had to be somebody right behind his neck pulling back. So somebody has sat on his back and pulled it. That is their theory. You tell me. No, absolutely. And let me just share this. The stun gun could be something like this, where you can fire this. Yeah. Let me just zoom it a little bit for you all. So if you see, this is what will get shot, and this will just pierce. And if These you two see, darts. yeah, this dart will leave this round circular mark on your body, wherever it is. Hmm. Uh, Yeah, yeah, yeah. where But it this is. will, according to them, this is not gone to his neck. This is gone to his backside of the body somewhere. The Uh-huh. one that is on the neck is the other one which you showed Right. With a laser. with the laser. Yeah, the one with the two receptors. It's like a scorpion's claw, Yeah. like a crab's claw. Yeah. Yeah. No, I think that's and for people who don't know, or people who don't understand, especially in countries outside of India. अभी इंडिया का मुझे इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पता, but I can tell you from US, and that's what I was talking even to Freeze as well earlier. Uh, every police officer, especially the ones who are doing the rounds, are supposed to carry two guns. One is this taser gun, or the stun gun, and the actual gun. The first point of, when they have to get hold of anybody, or they have to disable somebody, they cannot use the regular gun. The first thing is a taser gun, because what a taser gun does, and especially this particular kind of a gun, not with the laser thing, but with a copper wire, what it does is, wherever it impacts the person, like what Freeze was telling, the moment it hits you, you become disabled and you just fall flat. You cannot, you are totally, you lose control of your body, let's put it that way. And the only thing you can do right at that point of time is just fall flat and lie down, and it will be for at least good 10 to 15 minutes, where you No, will. no, no. It's not 10 to 15 minutes. It's 30 seconds to 1 minute. Right. It could be that, Hmm. but what we've seen is they become disabled and they are picked up by the cops and they are like Oh, thrown in. you're saying the one in America. Oh, there are Yeah, different ranging ones. Okay, correct, correct. Yeah, sorry. because Hmm. because sometimes what happens is, the laser one, if you see it, then yes, the laser one has a lower impact, and that's why the cops out here, they don't carry that one, because sometimes what happens is, because of the size of the people, the impact varies. Some people are like huge, fat, well built, more muscle, so for them the impact is different. But with a taser gun of this kind, which is with a copper wire, I think it will pierce inside the body and it will disable you. And they're actually taught specifically how can they use at a certain angle, just like a gun, right? A regular gun, you don't shoot a person right away in the head. That's how they are trained. You shoot them in the leg, you disable them, you try to kind of, if they're carrying a gun, you have to disarm them first. You cannot just Subdue shoot them. a person. So same thing for a taser gun is, if you use this kind of a gun with copper wire, it will definitely impact. But again, to the point that I was trying to make earlier, बहुत clear, this has to be well done, because एक बार आपने ये taser gun fire कर दी, and if it misses the target, then the only other option you have is you have to refuel it, and re-add the other ammunition, the next set of these targets, or the I came darts. across 1 minute. 1 minute. I came Uh-huh. across the new age ones are with multiple Oh, they are. magazines. But do you think India, yeah, Mumbai police will have those kinds of thing? So when I was checking, when I was looking for it, very to my surprise, I came across these two videos, and it is easily there on YouTube, where Indian police, especially there's a one of UP police and one of Gujarat police, which I have again posted on my Twitter handle.
where Right. they are demonstrating and they are showing. So it is there with the Indian police. Right. I don't know if I can Yeah. play it because it is on YouTube. So let's see if this plays. But the reason I'm saying is for multiple reasons. One is the cost factor. Here in US right now, if I look at this particular two dart kind of taser gun, it costs about $1,400. For a gun itself. And then if you're looking at getting all the refills and all that stuff, you're looking at about 2,000 easily, give and take. two thousand Hmm. dollars is about 7 twos or 14, so about uh, you know it's a good amount of money, and for people to train and all that stuff, definitely. So as you can see, I am showing you on the screen. This is a video. If you see this cop, or the officer is trying to shoot the taser gun, and there are two people holding this man, who I'm surprised is Look going to at the take. way he will fall. Wow. Yeah. Face down, fall. He fell flat. Did he really take that? Wow. Yeah. And this is the commando who's taking it. He's a black cat or a commando who's taking it. Man. Yeah, even for a demo, he's taken an actual one. Yeah, So he there took it he in the wakes back. up. So there were two, looks like two shots together. One went to his like leg and thigh area, and the other one in the back. Yeah. Yeah, but he's like lying down flat. There's another video I've posted in which a DG or a very high rank officer is taking it, and even he falls the same way, face down. Yeah, a DGP. That is UP police. So this clears that point that we were saying. Does Indian police have? There is Indian police have. So here they are demonstrating it. Correct. खुद का एक गोली. Yeah, they can only call it a goli. But yep. So a DGP. Oh wow. And this was shot, as you can see, from very close proximity, and Yeah, it was a quick shot, and that's it. I mean, he just fell flat. yeah. Yes, data prove, it does pain. It definitely, it's like piercing, through your skin. It definitely pains, but more than the pain, it is disabling your nerves for like couple of seconds, and you become like delusional. You will be totally like at loss as to what happened, and your body and brain will stop to kind of work for those couple of minutes. And at that point of time, police ho ya koi bhi ho, they have enough time to catch you and arrest you or whatever. So it's, yes, it's like an electric shock that you get. And so again, I don't want to do more of these because these are not good videos to show as well. So I'm gonna stop sharing. But I think this gives you an idea as to how quickly, you know, even for like half a minute, you will be disabled. You are literally disabled. You're motionless, and even 10 seconds is good enough, because in 10 seconds, people or cops or whosoever can overpower you. Now imagine the same thing this happened with Sushant. A single shot would have been enough for these, three, four, five, seven, whosoever, or whatever count of people, were there to overpower him and to do what they did. Now, the second point that Freeze also brought up was the mark on the neck. Uh,
there have been some discussions around, the mark shayad dog fudge ki jo chain tha usse bana. What do you have to say about around those things? I think we also talked about it offline as well, please. I mean, especially in India, the kind of leashes that are available, jo bhi leash hoti hai dog ki, there are various versions. If you just do a random Google search around stores, uh, it shows there are leather, there are, and I was even watching, if you do a Google search on Sushant fudge leashes, uh, he had multiple types of leashes. One was very thick leather kind of thing. The other one was half metal, half uh, leather, or some other kind of rexine kind of a material. So there is definitely that angle. But what do you think? What do you say? Looking at all the marks and ligature marks and all the neck, what do you think? You're asking me? Yeah, We've had dogs since childhood ourselves, and I am not convinced here from the beginning itself. Honestly, not even right now when I have cross-checked with these friends of mine from the Navy SEALs. But even in the beginning when I watched it, I was not convinced that this is a dog. A dog leash is what made up of nylon. You get nylon. nylon ones, or Yeah, you get leather ones. Okay, anybody try to uh, hold a leather strap on your belt for too long and try to, you don't get such a smooth running, I mean, this, I think it's like half an inch, a quarter of an inch smooth running mark running throughout. So when they told me that no, freeze, this cannot be a leather mark or a cloth like how we thought it would be a bathrobe or something was yeah, been spoken, or a bed sheet, or that green cloth itself which was hanging. They were like, no, 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 freeze, this is not that. This is a aluminum splints, it's called. Anybody can Google. It is for bone straightening, and anybody can just wear it on their body on a regular basis. Like, I can just wrap it around my arm, I can wear it like a belt on my waist. hmm, Okay? And it's a metal running in, covered with a fabric basically. So right, you get these armbands also nowadays when you go for festivals and stuff, which just hooks onto you, it just right, catches onto you and takes the shape. correct. So that's what it is with a metal, and you get of different length and sizes, how thick, how thin. So I'm just that's what they told me, that it can, I mean, that's what they think of, nothing else. Yeah, It's not leather, it's not cloth. This is aluminum, or a metal, very thin sheet with which he's been strangulated. strangulated. And what they could come up with is an aluminum splints, which is used for bone straightening. Yeah, fingers, arms, leg, a lot of stuff. I've Wow. posted some pictures. Yeah, 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 I know you did. Now, let me tell you something. In one of the, I'll show you actually. Imtiaz Khatri, actually, if I remember correctly, if I'm able to find that, in one of the pictures that I remember, he had some kind of arm injury, and he had something like that. So I'm trying to now just relate those two things. So I will definitely figure that out. If I'm able to find that image, I will definitely post it, because based on what you're telling me now, it's very very evident it could be something to kind of just straighten the arm, or some kind of a band that could have been used. uh, so I will definitely figure that out. I see a few more people And you join. Well, and you get it very easily on high-end medical stores. yeah, yeah, oh yeah, I know. Let me take a few more people. I see Venkiji and Gurpreet. Hello. Hello, Both of Venkiji. you. Hi. Hello, Hello, hello. hello, Varun. Namaste ji. Hello, Freeze. No, Hi. Hello, sir. Hi. Am I audible? Yes. Yes, sir. Yeah. Namaste, Varun. I saw your entire program yesterday. Rather painful, whatever you're going through. It was really, really hurting. I couldn't log in yesterday because of some technical hookup. Uh, anyway, this description itself is scary.
the way he has been. And as you say, these things are sophisticated. Medical equipments are available. Anybody can go and get it. It is whether waistband or belt band or Yeah. these are all easily procurable. So anyway, And I am still hopeful that multiple agencies are working, and definitely this nobody is going to be spared. Let us hold on to that. And one more thing, from whatever I just gave it a thought, and this moment has been going on. Justice for SR, justice. Let us give it a different perspective. Okay. Uh, Let us say, for example, you can refine on this. Anybody can chip in. Hashtag क्या बचा. Let us all ask क्या बचा. अभी क्या बचा है बॉलीवुड में? Just like you asked, कांग्रेस में क्या बचा है अभी? This next after these election results, you will come to know क्या बचा है. पूछते हैं हम ना क्या बचा है? क्या बचा है बॉलीवुड में अभी? Let us all ask for. true. Let that be the uh, what do you call tagline or whatever you call it. Yeah. Anybody can refine on this. We can change the perspective. We can add more strength to it. Those who talk negative or those who are feeling that nothing has happened. Great things have happened. It is not at 8 months. कहाँ गए ये लोग? It is a world movement. अभी touch your heart and say क्या बचा है इनके पास? Why are these people calling the vaccination people home and getting inoculated? Do they have the guts to come in the public and do it? The Prime Minister and President went to AIDS, but these people, you know whom I mentioned. They want those people to be things to be done at home. That itself shows they are rattled. They cannot face the public. Yeah. So this I is was my trying humble. to I was trying to figure out, especially since I was going to talk about Khatri. थोड़ा सा मैं दिन में काफी चीजें figure out कर रहा था. So there are two thoughts right now, Yeah. and two people, they're still kind of validating, which we'll know very soon. But there are two spots. One is Dubai, and the second is Maldives. These two places where he's supposed to be there. Now, my belief, my personal assumption says he definitely is in Dubai, because दुबई में बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली, एंड इफ यू लुक एट संदीप, उसके काफी राउंड लगे हैं. There are other people who flown to Dubai as soon as this thing got. Now, Dubai may one thing which is very good is the infrastructure. You get your vaccination, everything is done. If you have the right kind of people, connections, and all that, you are really safe, secure. I mean, ऐसे ही दाऊद नहीं छुप के बैठा हुआ, right? या इतने साल बैठा रहा, because Okay. there is a lot of, and Now खत्री one. connection, direct Yeah. connection. Yeah. उसको दाऊद का बच्चा की तरह वो ट्रीट करता है, जैसे he is like his son. No, here I would like to add that might have been maybe even a year back, but then now UAE and India have a excellent relation, and even for that matter, Israeli Mossad have come to UAE. So it Yeah, cannot be Dubai. As you say, it must be either Malay Island or Maldives. And Maldives. there is a triangular thing working out: Sri Lanka, Maldives, and Lakshadweep. Something is happening there. Okay. So these are all suspicious spots. And then see, there are n number of ports in the Maharashtra coastline up to Ratnagiri. Every port is not as guarded as. So you can use speedboats and go off the thing and board some other vessel. So Correct. escape is not a big issue. Yeah. No, I think So last session पे भी somebody brought that up, because I'm not a Mumbai native, so yeah, they that's true. mentioned कि सुशांत के घर के सामने, Yeah. there is definitely access to that, sea, and then That people have come from there and gone Bandra and done Bandra is there. No, Bandra is there, but that being in the precincts of the Mumbai city, it is under surveillance, top Okay. surveillance. These people can always move out. Of course, the government is there. So they can move down the coast and from some unguarded coastline. Even for that matter, Alibag. Alibag, it's down much down below Mumbai. So escape is not a big thing. So that part is there. But anyway, the agencies will get at it, and as freeze by just work out this change of perspective. We'll hit them, hammer them. क्या बचा पूछेंगे ना क्या बचा? अगर कांग्रेस मुक्त भारत करना है तो ये बॉलीवुड मुक्त तो करना ही है, and it is a big You movement. know, Yeah. Venki ji, just 2 days ago, 3 days ago, we saw this Alia's one small promotional Ad. something, Ah, okay, ah, ah, ad. I'll yeah. tell you,
this Bollywood for so many years, they are such arrogant and ghamandi people. They have always kept South down. This is the first time I Yep. am Yes, seeing, they got first hit. time that Exactly. they are going and speaking Telugu and she's trying to promote something over there. So something Exactly. has definitely hit them and that's why they are trying to move And like, or whatever. yeah, yeah, indeed freeze them. They have got a big blow. So let us capitalize on that. Yeah. Let us harp. Let it go across. क्या बचा है अभी? Let them सुबह उठेंगे तो let them get up with a shock. अरे यार क्या बचा है? Why not do it? So this is you can refine on this. Of course, others are there. Well, I think one of the What? things we can definitely start away is obviously hashtag अब क्या बचा. Arey, that's great. See, that is what it is. See, we put our heads together and let us not, this gives us added strength कि हम लोग इतने दिन से झक नहीं मार रहे हैं. Yeah. हाँ, agencies are doing their job, लेकिन हम लोग झक नहीं मार रहे हैं. अरे, wonderful. So And let's I that's have, we I want to tell everybody, and I had posted yesterday, I have yeah. for many years, but this time I'm going even loud and saying, I have boycotted even IPL, boss. Got very Good. boycott of Indeed. IPL also. Indeed, indeed, Yes. indeed, 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 definitely. So if you And remember, right, NK Sood के साथ एक session हुआ था आज से couple of months back. yeah, IPL, underworld, black money, drug money, exactly. Yes. all that is all connected. All Everything is connected. connected, Yeah. and यही सारा black money Bollywood के through channelize Yeah, होके, yeah. drug Yeah, yeah, money yeah. channelize होके, there was that particular movie, right? एक जो सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की एक मूवी आई थी, उसके अंदर सारा का सारा ब्लैक मनी ही हुआ था, एंड दे वर ऑल कॉट. द Oh, प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, दे वर ऑल अरेस्टेड. और सलमान खान ने अपने आप को बचाने के लिए ही फाइल्ड अ oh, केस कि मुझे तो इस मूवी के लिए पैसे ही नहीं मिले. सो oh. एंड अपनी इमेज को करने के लिए, बट वी ऑल नो कि किस तरह से ये ब्लैक मनी आता है बॉलीवुड में. Exactly, exactly, Yeah. exactly. And Venky's very Anyway, rightly said, it's not IPL, it's DPL. Dawood ah, Premier. exactly, exactly, exactly. Anyway, Yeah. I'm not a cricket fan. I tell my people at home also. But somehow, it takes time for someone to get across. Oh, Ujjwalji is there. That's great. Yeah. That's great. Anyway, Varun, let us keep our listening. Yes. Thank you so much. We'll that tagline we'll carry on with it. Yeah. Yes. Absolutely. Okay. Have a nice Thank time. you. Thank you, Chalo. Ji. Bye. All right. Yeah. Take care. Bye bye. Yes, Gurpreet. Welcome back. Thank you, Varun. Gurpreet, Uh, 1 minute. जी, Varun, about the bank stuff, we do that later. We listen to others. Yeah. Which one? Uh, Back. the the Yeah. bank, Yeah. the money Let side, me we just do take that later. let Okay. me take Venky's statement, comment, and then we will go on to that. Yes, please. Okay. Yes, Gurpreet. आ, देखिए वरुण, मुझे ना एक चीज अभी जैसे वेंकी जी ने बताया है कि अब क्या बचा है ये प्रमोट करना बहुत सही रहेगा, लेकिन इसके पहले अभी तक क्या क्या हुआ है उसको समराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले सुशांत का जब मर्डर हुआ तब क्या हुआ था, उसके बाद कैसे मूवमेंट ये चालू हुआ, क्या क्या एविडेंस मिले, गवर्नमेंट ने क्या किया, एजेंसीज ने क्या किया, अगर इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जाए तब हम एक पॉइंट पे आके पूछ सकते हैं। डायरेक्टली हम ये पूछें अगर सीधा किसी से भी अब क्या बचा, तो वो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि भैया पहले क्या हुआ था जो आप तुम पूछो क्या बचा है। Hmm. अगर हम समराइज नहीं कर पाएंगे चीजों को, ओके इतनी तारीख को सुशांत जी का मर्डर हुआ था, ये एविडेंस थे, उसके बाद ये एजेंसी ने ये काम किया, ये ट्रांसफर हुआ, ये सब इंसिडेंट हुए, ये सब चीजों को समराइज करना जरूरी है, तब हम एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं सामने किसी के भी। आई थिंक ये जो स्टोरी लाइन बनाना है, ये जो हम डेली इस तरह की ये जो सीरीज करेंगे, दिस इज द 8th सेशन ऑफ दैट सीरीज. आई थिंक वी शुड डेफिनेटली टाई देम ऑल टुगेदर टू मेक अ स्टोरी लाइन. आई थिंक वो जी बहुत जरूरी है ताकि सबको पता लगे कि हम अब आज की डेट में ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट फ्यू मोर डेज my focus through this series would be to talk about certain people like डॉक्टर गुप्ता के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इसको चेंज करने का कोशिश की. We will talk about Sharad Pawar, we'll talk about some of the other people, but you're right, we should also kind of tie them all together into a storyline. जैसे कि अभी बात की between Freeze and Venki ji, how these people have now started going down south. वही साउथ जिसको ये लोग कभी देखा भी नहीं था इन्होंने और इग्नोर करते थे, वहां से सिर्फ मूवीज उठा के रीमेक करते थे. कभी ऐसा नहीं हुआ था कि
दे वुड प्रमोट इट, वहां से चोरी करेंगे या खरीद लेंगे, और वहां के स्टार्स को भी इग्नोर करेंगे। ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, जिनको इन्होंने बिल्कुल भी, एंड देर अमेजिंग, सम ऑफ देम आर अमेजिंग आर्ट स्टार्स, बट इन सब लोगों ने किया। पर आज की डेट में, क्योंकि अब इनको पता लग गया है कि बॉयकॉट हो गया है बॉलीवुड पूरी तरह से, so now they are left with nothing else but to have the bread and butter through the South industry. But don't worry, we'll not let that even happen. And ये वो एक्टर्स हैं जिनको अपनी हिंदी लैंग्वेज में मूवीज में एक्ट करना आता नहीं है, ये अब साउथ में जाके डिफरेंट लैंग्वेज में एक्ट करेंगे, दैट विल बी लाइक हिलेरियस, वेरी हिलेरियस। लेकिन देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये हो रही है कि साउथ वाली जो फिल्में हैं जो अभी वो पैन इंडिया पे लेवल पे आ रही हैं, जैसे RRR होगी, और एक अल्लू अर्जुन की एक नया पुष्पा का क्या आ रहा है जो, वो सब पैन लेवल पे आ रहा है, तो काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा सब चीजों को लेके अब। Yeah. That is also true. I mean, it was supposed to be good for them, but हम्म, unfortunately, because of these Bollywood stars, it will definitely not pan out. And we will not let that happen. Jesse, your questions are. I'm gonna randomly pick some questions as well. Why CBI made? To be very honest, CBI did not make. Right. The only question I would have is whether he was interrogated or not, whether he was taken into some kind of custody or not, whether his statements. But at this point of time, if people have to be believed, and if the sources have to be believed, this guy is definitely out of the country, and he's been offline completely. हमने एक राहुल खनल के बारे में किया था. That guy is still active. I saw his activity a little bit, but I've heard, again, this is another dot I wanted to connect. Uh, Imtiaz Khatri is also buddies with that guy. He used to call him his kind of what was the word, boss. ये उसको boss बुलाता है. Imtiaz Khatri calls him boss because, if again the sources are to be believed, he helped him uh, escape the country. He used his contacts to get him out of country. And so ye sare ke sare, they are all connected to each other in lots and lots of businesses, black money, mafia, underworld, drug money, that they have to help each other to save each other. Simple as that. That's how these guys are working right now. Yes, please. I just wanted to add one part since we're talking about a little bit of movement in South. Yeah. Do not forget, Kwan, the company is Mumbai, Delhi, Hyderabad chain of companies. So it's in three different cities, and Hyderabad is also connected. Please continue. Yeah. And when it comes to Hyderabad or anything, Venki, do you have any comments? Anything you want to say around this? I wanted to speak on the taser thing and that strangulation mark. Sure, sure. We can talk about that as well. Yeah, But this is my theory, totally my opinion. What I feel is there were rumors that Sushant had met Ria in the evening, right? Like he drove her to his house and dropped her to his house and he came back. What I feel is this was a total plot against him. They made Sushant come out of his house so that the culprits can be in his home before he comes in. Do you get me? Like it was a total surprise for Sushant. He dropped Ria back. When he went back home, these people were there waiting for him, and जो भी किया उन्होंने किया. और and I think Freeze by is right. They have not used a dog belt. If they have bought taser gun, couldn't they bring a strangulation weapon? They would have bought it. Obviously, they would have bought it. So I feel this, and it has happened in terrace only. 100%. This is what I feel because there was another body also. We don't know if the other body was stabbed to death or it was strangulated. We don't know what happened to the other body. So yeah, what I feel is this whole thing has taken place on terrace because CBI also spent hours and hours with Pitani on terrace. So everything has happened on terrace. Why I'm pinpointing on terrace is because even if blood
if even if blood drops on the floor, it's easy to clean the terrace, right? What? Yeah. If Yeah, it's easy to wash the terrace, but if you are in the house, he would have struggled. He could have broken the TV. They couldn't have done anything. If he had broken the TV, it could be evident, right? So I feel everything has happened on the terrace. And I think, this is my feeling, I think uh, he was blackmailed, and extortion भी हुआ है उसके साथ. 15 crores जो घोटाला हुआ है ना, I think it was extorted. Like, if you see Sachin Waze, he has extorted money from Bark. Through Hawala. I think even this might also be done through Hawala. Like, because Ria was getting money from Kwan, right? Small amount she was getting every month. I think this is how it's done. They have taken money also and killed him also. This is what I feel. Yeah, I think Freeze wanted to kind of even talk about that money aspect as well, and that's what he was just referring to. So, Freeze, I think this would be a good segue. We should now connect those two pieces. Uh, while I'm looking at Rudur, I don't know why should we not watch IPL. Please answer my question. Okay, before Freeze says anything else, Rudurji, basically, like we mentioned, and a lot of people have mentioned, like NK Sood sir has well also confirmed, there's a lot of this black money, underworld money, which is involved in IPL. A lot of these cricketers are also involved. They're aware of these things. And all this is drug money, all this is trafficking money, which is being pumped. If we keep on watching, the TRP goes up, and the money keeps on flowing, and that will help continue these malpractices and these wrong businesses. But if we start जैसे हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, right? Why do we need to boycott Bollywood? It's the same point. We cannot have this black money pump into our industry. Yes, please, बोलो गुरप्रीत, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए एक बहुत जो चीज़ थी अच्छा जिस बारे में बात करना चाहता था मैं। देखिए आईपीएल होता है या कोई भी गेम होता है तो आप इंडिया के अंदर देखेंगे जितने भी ये बैटिंग कंपनीज है जो उनका एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है कि इस परी मैच में लगाओ, बैटर वे में लगाओ। जितने भी टॉप के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, कि जितनी भी कंपनीज़ है, ये ज़्यादातर वर्जिन आइलैंड हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे आइलैंड वाली कंट्रीज़ हैं जो, जहाँ पे किसी का लॉ नहीं काम करता है। ये पूरा मनी वहाँ पे डिपॉज़िट होता है पूरा उनका। और उनके इंडिया के अंदर बैठे हुए कुछ-कुछ वेंडर्स रहते हैं, जैसे कि 100 का ₹200 बना लिए, छोटा अमाउंट जो है, वो उनको ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी सारा बड़ा अमाउंट जो है, वो ऐसे आइसोलेटेड कंट्रीज़ जो आइलैंड पे बैठी होती हैं, जहाँ पे किसी देश का कोई कानून काम नहीं करता, वहाँ पे डिपॉज़िट होता है पूरा पैसा ये। ये सिर्फ़ लोगों को चेक करना चाहिए सब चीज़ें एकदम से। और And इस full चीज़ से fixed है ना. इंडिया से कम दिन का हज़ारों करोड़ रुपए बाहर जा रहा है। वर्जिन आइलैंड हो गया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाड हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, वहाँ जितने फॉरेक्स कंपनीज होगी या बेटिंग कंपनीज होगी, वहाँ पे ये पूरा पैसा जा रहा है इंडिया का, हर दिन का ये जा रहा है। ये वहाँ पे एक बैठे हुए बंदे से मैंने बात की थी, बिकॉज सिंस मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ चीज़ें। लेकिन बाद में पता चला कि सारी कंपनीज जो मेन, ये पूरी ऐसे आइसोलेटेड आइलैंड के ऊपर एस्टेब्लिश है। बैंक अकाउंट भी वहां पर है, वहां से ये पूरा पैसा पानामा और स्विट्जरलैंड में भेजा जाता है। इंडिया का पूरा पैसा हर दिन कम से कम बता रहा हूँ, अभी अब रिकॉर्ड कर सकते हैं इस चीज को, मोर देन 1000 करोड़ रुपीज पर डे इंडिया का बाहर जा रहा है इस पे। Wow. Yeah. Yeah. So, Freeze, going back to the same point, I think it'll be a good point to discuss right now about the financial जो transaction और जो घोटाला, जिसे हम घोटाला कह रहे हैं. Yeah. So before I'll come to that, since he spoke about the islands, everybody should remember that the same Sardesai went to interview Lalit Modi to Cyprus. Okay, I mean, if you guys remember. Now, in the recent times, we've spoken about the scopolamine, the drug, right? Which completely kind of hypnotizes you, and your willpower is completely in somebody else's hand. So,
I was thinking because in the FIR it is mentioned about the father has complained and mentioned that I don't know how many crores. If somebody could correct me, 15 crores. Somebody Uh, did say some time ago. 15 crores is quite a huge money. So if that money is been moved and siphoned off, what are the possibilities? How it could have been done? So I few days ago I've been asking on every platform, like if any one of us is a ex banker or a CA chartered accountant, they could come forward because I have these two theories and I wanted to bounce it up with them and find out if this is possible. So somebody did come forward. I posted my Twitter. So a banker as well as a CA came forward. CA being a lady, she came forward and she said, "Okay, please tell me what is your theory." So first, obviously, I shared the scopolamine video with the both of them. They watched the video, then they again came back to me. They said, "Okay, TK, we watched the video," and they were quite shocked seeing the video. And because there's money angle with scopolamine, there's only money angle. How you can completely fool people and cheat them and take their money and make them sign on stuff and like that. So what if I ask them, please tell me what are the security parameters that is required for such a big amount to be moved out of Sushant's bank account? So they told me first, if there are pre-signed checks, okay, just like how we have post-dated checks, if there are pre-signed checks, the check, however they have got signatures of Sushant on it, that's a different issue. Pre-signed checks, somebody can take the checks to the bank matches the signature. That's the first parameter or the first fence of security, Standard first process. step, Yeah. standard process. The second one is the bank manager or the relationship manager. He calls the account holder on the registered mobile number and he asks, like, hello, so and so person is coming up with a check with a very high amount. Do you want, is it you who have signed it and should we do the transfer? And the person says, yes, do it, or no, don't do it. I have not signed it. This is the only two security checks that they do, nothing else, and the money can be moved out. So here is my theory. Now, since we are talking that there could be underworld, gangster, blah blah blah. So taser gun ho gaya. So my first theory: what if Sushant was on a gun point? ठीक है, हिंदी में अभी बोलूंगा, उसके सर पे गन रखा है और बोला, हे साइन कर अभी ये. We have come across that some people did come in and on whatever pressure took away the hard drives. So on that lines, I'm saying this point. Somebody kept a gun on him और बोले तू sign कर अभी चुपचाप इधर इस पे. He has signed it. At the same moment, somebody takes the checks, goes to the bank, same process, puts in their company name or the person's name. The bank manager sees it, cross checks the signature, again calls Sushant on his number and says, sir, have you asked for it? And he's still under a gunpoint. Okay? And he says, yes, please do it. That is one. The second one, if the signatures were done under the influence of drug, scopolamine, again coming to point, तो सिग्नेचर तो वो कर दिया है और उसको स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है कि अभी आपको फोन आएगा फ्रॉम द बैंक एंड यू हैव टू से कि यस आई हैव साइंड इट. Do not forget, when they had gone to the Europe trip, it was cut short. They came back, and there are multiple print medias in which journalists to a lot of people have questioned and asked from Neeraj to Keshav Watchmen, and they have said that after Sir came back from Europe, he was a different person altogether. And if you guys remember, I had told you guys the first time when I brought the scopolamine theory that in the recent 15 years, a lot of couples and a lot of these cheatings are done in Scandinavian and European countries. So we do know they had gone to Switzerland and France. ठीक है. So what if his last dose was done there of scopolamine because it is only over there. The Thai also said that he was seeing things and he found something in the painting and blah 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 blah.
Yeah. He comes back. He comes back. He's been taken to her house. Hello, Jwelji. How are you? He comes back. He's been taken to Thai's house. After Thai's house, he's been moved to Waterstone. During the Waterstone, the Mont Blanc का agreement होता है, ठीक है? And there's a very funny thing. जब भी Mont Blanc का agreement होता है, वो agreement के अंदर ताई का भी नाम है. So these both of them are actually renting that house. ठीक है? And in that, there is a report that says that to the agent, it was told that in the next 6 months, they are planning to get married. Were there any marriage plans or something between them? I mean, it doesn't look like, doesn't seem like. No, never ठीक है? heard. हालांकि अंकिता Never के heard. साथ तो उसने खुद बोला था, but never with Ria. अंकिता के साथ लंबा रिलेशन था ना, in terms Yeah. of And they period. disclosed it that they'll be getting married in a certain year, in a So certain how month. could it be with this madam? It's very funny. ठीक है? Correct. And he was, so what if under the influence of scopolamine it was done? And also keeping in mind that in the recent times we have heard that there's always an insider of the bank, okay, involved in most of the bank scams. So what if the bank manager or the relationship manager is, compromised, and he's not even called back Sushant asking for it? Now, the other very funny thing the CA pointed out, and she told me that, Freeze, there is something funny I find. All this of your points also makes sense because it's easily, these are the only two securities, so it's possible from that angle. But she found something very suspicious, that the companies which were formed, the companies, because this woman is watching our discussions and she's following the case. So she said these companies which are formed and the IP addresses of the companies which were changed is a very fraudulent behavior of money siphoning off. So from the bank, it has gone again to a company in which Sushant is also a director, and then from there it's gone somewhere else. So that also she said, if the CBI is gone to the bank, and CBI will have all the documents, all the papers, because the bank has to give to the CBI, okay, इसका last एक साल का पूरा transaction दिखाओ, they will show it, which is the last transaction happened, which is the check. From there, it went to which account, which company, or everything. They would have everything. So she had this doubt about the company that was formed and IP addresses changing. So companies also take kind of a loan, or there is an investment into the company, and then from there again, money is moved somewhere else. Please continue. Absolutely. Yes, yes, उज्जवल जी बोले, आप कुछ कहना चाहते हैं? Hello to everybody. Happy New Year. Happy Baisakhi, Happy New Year. Ugadi, Bihu to everyone. Yeah. Uh, Yeah. दोस्तों, Varun and Freeze, whatever you've just said, Freeze, it makes a lot of sense, and there is a lot of information available in public domain itself of that period. See, there are extract of chats, leaked chats between Shruti Modi and Ria and all that. Those are also there. Then there are enough statements in the social media, citing that Sushant himself was aware that there a lot of money has already been siphoned off his bank account, and him contacting his bankers, yeah, and asking for a statement and details. Okay, so he was already from the month of April onwards, he was aware that a lot of siphoning has already taken place, and that is the reason why from that point onwards he went back and established contact with Disha Salia more aggressively, and then hence his plan to get out or whatever, countermeasures. Now, जो आप साइफनिंग की बात कर रहे हैं, जो आप डमी कंपनीज की बात कर रहे हैं, और जितना गुरप्रीत जी ने बताया, this is all very true, but this is something which one can still do legally in the Indian system. आपको मालूम है, there is something called a promissory note, which is held legal only in this country of the world. Nowhere else in the world this practice is allowed. अब वो system क्या है? Through the front companies, whether it is your black money, slush money, drug money, stolen money, you can route it. Okay, via Dubai, you can route it to any of the tax havens
और वहां पे आपको क्या है, यू नॉन डिस्क्लोजर conditions are practiced, in Switzerland or Virgin Islands or Panama or Mauritius, Singapore, elsewhere. So आपको करना क्या है? You just have to get the money deposited into your account there, and then how do you bring it back to India? Well, let us imagine Pappu Shri or Damat Shri. They go to London or from there they travel to Switzerland. They just go to their bank. They say, I want 2 million transferred into India. Okay, kindly give me a promissory note. So the banker over there, their banker, after verifying their code and all, they will simply give a slip of paper. So and so request made by so and so, whose antecedents and veracity we have verified. We have received a request for transfer of $1 million dollars or euros into his account in India. Now that slip, this may kindly be credited. That's all. उसमें वो बस अपना साइन करके बैंक का एक सील लगाएगा, बाकी कुछ नहीं है. देयर इज नो बैंक का दूसरा आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं है. देयर इज नो डॉक्यूमेंट नंबर, otherwise anything which has gone through a computerized system will always have a doc number, an identifier, a clear cut identifier. In this slip there's nothing. वो स्लिप लेके वो आते हैं आरबीआई के में, बकायदा एक काउंटर है, डेडिकेटेड काउंटर है फॉर दिस. दे गो एंड प्रेजेंट दैट स्लिप टू दैट काउंटर and give their Indian bank card details ki this may kindly be credited to my account, and RBI authorizes it, and then they take it to the bankers, it gets credited into their account. They go to their broker, they say अच्छा इसमें इतना मिलियन आया है, इतना बिलियन इन्वेस्ट कर दो. So it is legally come back and got invested into the stock market. है ना? तो ये this is only being practiced in India. Nowhere else in the world this is legal. और ये सिस्टम को कभी ना कभी खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज इट कैन क्रिएट बूम एंड बस्ट बोथ इन योर स्टॉक मार्केट्स एंड मनी मार्केट्स. तो ये तो है, ये बीइंग डन, है ना. एंड सुशांत वाज अवेयर दैट समवेयर लॉट ऑफ मनी हैज बीन साइफन्ड. दूसरा, देयर इज अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल in the open domain that Ria had done a lot of peddling, purchasing of drugs using the credit cards of Sushant only. She wasn't paying from her own account. Yeah, from different accounts of Sushant, she was just swiping the card and paying, making those payments. Okay, so those would all be in the system as a part of a written record somewhere. And I think ED would have already been onto it. They would already have these details. That is my feeling. Yeah, and on the stun gun, of course, whatever you have said, Freeze, could be very well true. We don't know exactly what has happened, but yes, as asphyxiation to nahi hai. And asphyxiation is a very loose word which has been used in the PM report of Cooper Hospital. It could mean anything. Asphyxiation means दम घुटना. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से भी हो सकता है, खांसी से भी हो सकता है, किसी ने गला घोंटा उससे भी हो सकता है, किसी ने पिलो आपके मुंह पे रख दिया उससे भी हो सकता है ना. So certainly what पर you उससे say, हड्डियां नहीं टूटेंगी. That's the thing, right? हड्डियां टूटना वो जो लेग्स के ऊपर और no, जो देखो वरुण, ये इसमें मैं ये आपको बोलूंगा, आप सबको बोलूंगा. I'll invite everybody. Please go back to Dr. M. Padma's first two videos. They are pure analysis of the body injuries and the way the body was lying and why it was lying. है ना? तो वो आप देख लो, because if the power of the charge which has been used to shock him, if it is too high, first thing, it causes paralysis. You see one side of his face is paralyzed. The muscles are almost like frozen. That is one. Even the look is frozen in the eye. So first stage is paralysis. Then the second stage is, if the charge is too high, it causes your spine to crack, your bones to crack. And this is the reason why I think on his right thigh or something, yeah, there is a bandage which you find. Yeah, probably bandage तो बाद में बांधा होगा, उसके ऊपर उन्होंने बहुत टाइट उसको बांधा होगा किसी चीज से. Because वो कब होता है? When your femoral bone,
the bone, your thigh bone, it cracks, and then it crushes, it punctures your femoral artery. Femoral artery is the major artery in your leg, which runs through your thigh and then onto your feet. या सो वो फीमरल आर्टरी अगर पंचर होती है ना आपके हाथ में या कहीं पे भी, तो वो एक फाउंटेन निकलता है ब्लड का, उसको आप रोक नहीं सकते, फिर आपको उसको बहुत टाइट प्रेशर के साथ प्रेशर बैंडेज बांधना पड़ता है, एंड इट टेक्स टाइम फॉर दैट ब्लड टू बी स्टॉप. सो आई थिंक उन्होंने ये एनालाइज किया था इसका, ऐसे ही बताया था. एंड प्लस a couple of forensic specialists from Australia, in conversation with Dr. Bhupesh Kumar, had also suggested that. इवन डॉक्टर भूपेश कुमार का खुद का ये एनालिसिस भी है. Correct. आई वुड रादर गो विद दैट कि Yeah. ये जो टेजर गन या स्टन गन यूज किया गया है, द चार्ज हैज बीन वेरी वेरी हाई, एंड दैट हैज caused a lot of his bones to crack. Yeah. Right. And the damage to the femoral artery. Ujwalji, my friends told me, like, if this is given without any in a sudden, without your knowledge, and if it's given exactly at the joints, in some cases even the joints pop out. See, this was not just the joints now. If you see his upper body, it was all supported from behind. You see him lying supine. The first image that we see of his mock photos which were leaked, he's been supported. His back has been supported. Yeah, Niche kuch, it's their wo, observation a also that lot why of there are cushioning. so many support to his body. They found his body, the Yeah. weight is kept very suspicious. Yeah. Yes. वो उसी लिए है. Plus उसी pose में, if you look at the face, it's slightly frozen on one side. Yeah. वो आप image को अगर And I ध्यान से think this is a देखेंगे. valid question or a point that Ruchita is saying, that then why no report mentioned the obvious paralysis? Why was this not even kind of documented anywhere? So, looks like Ujwalji dropped off. So that's what Ruchita. I think these are all some of the assumptions. I would say some of the preliminary observations from how the body looked like. अगर आप उस वीडियो को फिर से देखें, आप उन images को देखें, it looks like he's all over the place on the bed, and फटाफट उसके ऊपर चद्दर डाल दी जाती है, कवर किया जाता है, and we don't even know. And even when he was carried from the stretcher to the ambulance, so many people were holding him from all sides. If you look at that video, it's like almost 5 people. Arey yaar, he was okay. Let's say he's a 6-footer. Somebody could be on the head end, somebody could be at the feet, and that's pretty much it. But there are people, and then with white chadar ko stretcher pe bhi main dekh raha tha. I was watching this video last night also. लोग उस चादर को नीचे से कवर कर रहे हैं कि जैसे कुछ ड्रॉप ना हो जाए या आई डोंट नो. So yes, Ashaji, we are definitely talking about Khatri as well, and that's how we are kind of connecting multiple dots here, because what has happened is there were people, more than one people, who have been involved in what has happened here. जैसे कि अभी उज्जवल जी बात कर रहे थे या उनसे पहले वेंकी भी आए थे. It's quite possible, he if it has to be believed, if Sushant was out of his house, it's quite possible he was being asked to go out. It's quite possible. ताकि पीछे से, now that even makes a little bit more sense, because उसकी presence में, फज की presence में, question यहाँ ये भी आता है कि Khatri was not Sushant's best friend. कि Fudge won't bark, yeah, Fudge won't do something. So where was Fudge at that time? So it was all kind of very strategically, like everything was planned ahead of time. फज को उससे पहले ही घुमाया भी गया होगा या रूम में भी बंद किया होगा या जहां भी होगा, because otherwise if you imagine 2 points. One, लोग कहते हैं कि फज को शायद कोई मेडिसिन दे दी गई होगी. It's a very slippery slope. जरा सा भी इधर का उधर हुआ, and plus even with the medicine, it's quite possible कि फज का भी टेस्ट हुआ होगा. When a murder has happened, I'm very confident कि ये देखा गया होगा कि फज को कुछ दिया तो नहीं गया था.
तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है. द सेकंड थिंग इज maybe there were already plans, so he was taken into a different room, somebody would have been with him, somebody known. किसी अननोन के साथ तो फज चुप वैसे भी नहीं बैठेगा. So there are different things, there are different possibilities, uh, and that's where we don't know what has happened around fudge. uh, that's one point. And why Imtiaz Khatri ka aur bhi jo question पूछ रहे हैं कि where is he, like I said, I mentioned 2 points. There are two places right now, and one of them is definitely the most logical place, but people say, and there are certain reports that he has flown as soon as the COVID was over, uh, because initially the first month itself, uh, इम्तियाज खत्री का नाम आना शुरू हो गया था इसके ऊपर, एंड ही वर्कड विद सर्टेन पीपल टू एस्केप द कंट्री. ही वांटेड टू. Unfortunately, due to COVID restrictions for both the countries, any other country as well, he was not able to leave. But then he definitely left for Dubai. Now, uske baad, whether he's gone to Maldives or not, that is still not confirmed. Because there was one more report that was also suggesting he could eventually then land up in Pakistan as well. But I really personally don't believe he could go to Pakistan. So that I'm gonna just debunk that kind of theory. So either it has to be Dubai or UAE, or it has to be Maldives. But जैसे कि अभी बोल रहे थे, I think it was Ujjwal ji who was trying to explain. Maybe it's possible it's one of those islands for sure. So that's what we are talking about, Imtiaz, and the abnormalities that we see. Now, one more thing which I would like to highlight, and I love each one of you to follow. Of course, Imtiaz Khatri ka Instagram account जो है वो personal है. It has been made private. It's not open to public. But there are so many people connected with him who have not made their accounts private. Some of them have not disabled or removed the pictures. You will find, sorry to use this word, shitload of data points. There is this, of course, his best friend, which is Guru Randhawa. He has tons and tons of images and a lot of parties that have happened. The same faces, चाहे वो मनीष मल्होत्रा हो, चाहे वो खत्री हो, चाहे वो and one more like person who might be knowing certain things is Urvashi Rotela. Urvashi Rotela is Abhi, I don't want to add new people into the mix and all that stuff, but if you all can, you should go and look it up on her Instagram या social media handles पे. You will find her also with most of these people जो सुशांत के केस में related है. I know her motive might be totally different. She wants to be in the limelight, she's an actress, whatever. But at the same time, she might have a lot of data around certain activities. Her second home now is India. Her primary home, most of the times where she's found, is UAE. ये वहां पर ही ज्यादातर दिखती है, with a lot of these people who are high profiled mafia. Again, I'm not pointing fingers, I'm not kind of targeting her and all that stuff कि वो किसी चीज में involved है. All I'm trying to say is some of these people, you should definitely go and watch their Instagram accounts and some of their social media accounts. You'll find a lot of data. और वहीं से मुझे ऐसी ऐसी कुछ pictures मिली where I can connect Imtiaz with almost everybody and anybody. I didn't even know he was connected to like certain people. Right, obviously he was connected to Tiger Shroff because of Suraj Pancholi and their association, but then I see him with Abhishek Bachchan, I see him with Shah Rukh's kids in Dubai again, and then I see him with Sanjay Kapoor's kids. I see him with Arjun Kapoor. I mean, you name it, and it's all over the place. Unfortunately for him, making his account private didn't help much. So, He is the only guy completely disappeared from the face of the earth. The yeah, only guy. And exactly. his name was not, it was not taken by us. We had no idea. It was taken by Shruti's lawyer. Yeah. Now, at that moment, why did he take? We don't know. And after that, this man has completely no post, no update
on any of his social media? Nothing. And if he's ran away, why would you run away when your name has been taken up? Correct. Why would you do that? Yeah. And उर्वशी उर्वशी रोतेला का नया घर का जो टूर दिखा रही है वो दुबई का, जस्ट लुक at such a young age. I mean, what have you done? It's that's crazy. my This point. is That's what my this is point. again, Uh, sorry to interrupt. This is just like how we have the Rakul from, I mean, at this early age, how are you having so much? Oh man, even I want to do that and make that kind of a property and money. see, that's what I'm saying, right? These people, there are few people, and I'm gonna bring these names out in the next few days and weeks. ऐसे ऐसे लोग जिनको हम सोच भी नहीं सकते. I mean, who would have thought? I'll just joke a little bit around this. Who would have thought कि भारती इस drug angle में उसका नाम आएगा? You know, somebody who we've just cherished watching, laughing and smiling and all that stuff. Who would have thought Bharti? Now, when I started observing, you know, I've been following Urvashi Rotela for a very long time. एक ये है, एक सलमान खान का होता था, अब तो वो इतना नहीं है. That little guy, I'm forgetting his name, who used to date Salman's sister as well, but then he, ditched her. He has been supporting social media. पे अगर आप, let me tell you his name. The little guy who was with. Okay. And so even he has not done any kind of like movies and anything like that, that he has that kind of money or that kind of popularity, but they are making money like anything. इनके घर देखो, रटेला का जो आप बता रहे हो, that particular, she shoots with all the high profile brands. Recently there was one video or a clip that came out where she was, I think, trying to wear either a Versace or some kind of, and she dropped it, and हमारे जैसे तो उसको पकड़ के ही डर लग जाएगा कि भैया, and she dropped it. But yeah, Samrat, exactly, somebody, Pulkit Samrat is the guy. Pulkit Samrat का अगर देखा जाए, both the husband wife, they're not husband wife yet. The wife is actually also an actor, the girlfriend. These guys have such a amazing life, such an amazing life. How? कहाँ से आ रहा है इनका पैसा? कौन दे रहा है इनको? And then there are many more. I'll bring up all these names. I'll try to connect, the storyline. But these people are very, very, very shady, and there are certain groups who have certain people, usi group ke andar, usi gang ke andar, they're doing certain activities. So again, going back to, Imtiaz Khatri, we have seen so much stuff. His NGO, the NGO that he works for, या जो इन्होंने अपना एक non-profit बनाया है, which supposedly works for cancer patients, they also have a similar kind of an NGO for the underprivileged kids. Now, again, we all have heard small kids. कैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग उन चीजों के अंदर यूज होता है. I don't know if that particular NGO, because I was trying to find his the ये जो इंडस्ट्रियल जो इनकी बिल्डिंग कंपनी थी, उसका नाम था शायद INK, इंक बिल्डर्स और इंक इंफ्रास्ट्रक्चर्स. वो वेबसाइट, वो सब कुछ बंद हो चुका है. दैट वेबसाइट डजंट इवन एग्जिस्ट नाउ, बट they've just disabled it because the portal itself is still registered. Okay, I just got some kind of an update that Khatri is right now in Bali. So this is something which I just got an update, and I again cannot validate, but looks like he's out of India, which we all knew, but he's right now in Bali. Yes, Bunty Sajde. Who doesn't know that name? Everybody is aware of this name, and there are many more names. I'll bring up all the different people, different names, and I'd love to kind of connect all the kind of pieces of the puzzle. But that's what, Imtiaz Khatri se related, there is no doubt, there is not even an iota of doubt
that there is some conspiracy. That's why I posted that image from Guru Randhava's Instagram post. You should go and watch Guru Randhava's Instagram. You will find so much stuff. They are like best of buddies. They are best of buddies. And then not only that, there are few more people who are like best friends with Imtiaz, and they also have a shady past. They also have a shady history. So we will definitely keep on talking about that. I don't know if anything else you want to say, Gurpreet, before we end this session. I really want to be very mindful of time because last night 5 घंटे का जो हुआ, I really don't want to continue that. It's almost 1 hour, almost 40 minutes. Anything? नहीं नहीं नहीं, कुछ बात नहीं करनी है, बस मुझे आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना है मुझे। अब बहुत मतलब मेरे ख्याल से इस चीज को 12 ज्यादा साल हो गया, 15 साल हो गया होगा शायद, कि ये जो ड्रग्स वाली जो बात उठती है ना बॉलीवुड में, ये छोटे छोटे जो जैसे कि उस वक्त पंजाब में था मैं, 2006 की बात है। तो उस वक्त भी ये बहुत ज्यादा था वहां पे। ये सिंगर्स की बात है, जैसे कि दिलजीत हो गया। दिलजीत के बारे में लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं ये बता सकता हूँ कि दिलजीत दोसांझ और बलबीर बोपाराय ये काली सफारी में बैठे हुए थे। 2006 की बात है ये आपका घुमार मंडी के पास कोई कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। वहां पे कार के अंदर, सफारी कार के अंदर बैठ के जो कफ सिरप आता है, जो कोरेक्स, बहुत चलता था पंजाब में उस वक्त। 2006 5 6 की बात बता रहा हूँ मैं। बहुत चलता था उस वक्त, पी के लड़कियां छेड़ रहे थे वहां पे ये लोग। और कोई यकीन नहीं करेगा, अपने इसी हाथों से मैंने बलबीर बोपारा को पीटा हुआ, ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, दिलजीत दोसांझ। कोई यकीन नहीं करेगा इस बात की डेट में, आज की डेट में Wow. कोई यकीन नहीं मुझे नहीं करेगा। पता था ये आप जितने, लुधियाना से हैं। नहीं नहीं, मैं रहा हूँ पंजाब में। मैं तो जॉब के सिलसिले में घूम रहा था वहां पे मैं। अच्छा, तो बस वहां पे अचानक अच्छा, देखा मैं क्योंकि मैं लुधियाना से कि हूँ और ये बात कर रहे हैं, ये खालसा हाँ जी खालसा हाँ जी कॉलेज फॉर है सामने हाँ कुमार जी मंडी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं था वहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं दुराहा में रहता था नाना के घर पे। तो वहां से क्या, मैं जॉब की तलाश में गया था। जॉब की तलाश में क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था लोकेशन, मुझे तो घूम रहा था वहां पे मैं। तो वहां पे अचानक देखा कि एक ब्लैक रंग की सफारी है, बलबीर बोपाराय की थी उस वक्त पे। तो ये अचानक से लहरा रही है और रुकी हुई है साइड में। अंदर आवाजें आ रही हैं बहुत सारी। अब मैं बोला कि आवाजें आ रही हैं, गाली वाली बक रहा है। अब नॉर्मली क्या, मैं पंजाब से नहीं था, मैं हूँ एक्चुअली भिलाई से। हमारे लिए माँ बहन की गाली बहुत बड़ी मैटर हो जाता है, ओह, पंजाब में नॉर्मल चलता है वो सब। तो मैं बोला कि ये गाली बकरा कौन है ऐसा बदतमीज टाइप का। तो अंदर में पहचान नहीं पाया बंदे वो, लेकिन दिलजीत को पहचान लिया था मैं। मतलब ये क्या है। तो मस्त अलग ही लेवल था पूरा, लड़कियों को छेड़ रहे थे वहां पे। और आखिर में इस बात को कोई यकीन नहीं करेगा कि 2006 में मैंने खुद अपने हाथों से बलबीर बोपारा और दिल्ली दोसांझ को, खालसा वो जो गर्ल्स कॉलेज था जो, उसके सामने पीटा हुआ है। कोई यकीन नहीं करेगा आज की डेट में। राइट। अब आप सोचिए यू कि नो उस आई समय ये वुड, सब चीजें। आप खत्म, आप फिनिश कीजिए bro. जी जी जी। और ये सेम चीज, यही सेम चीज जब हनी सिंह का जब गाना आया था वॉल्यूम 1, तो मौली 7 फेस में उसको आइकन आइकन गाड़ी के बोनेट पर बैठा के पीटा गया था। उसका बादशाह बहुत पतला होता था, मालूम आपको, बादशाह बहुत पतला होता था। या ये सब चीजें बहुत चीज लोग भूल गए हैं कि क्या क्या चीजें पास में किए हुए हैं। और आज के सब उनका नाम लेते हैं, अच्छा अच्छा भाई ऐसा है वैसा है। पास में कोई याद नहीं करते कौन कैसा था उस जगह पे। या जी If you check and notice, we saw during this farmers protest, okay, you'll be very shocked to know in the recent times ये जितने भी पंजाबी rappers जो आ रहे हैं, if you जी look at the videos, if you look at the lyrics, they all are having the same pattern, that is women, guns, lifestyle of bling bling and glitter. So this is the जी same lifestyle of the East Coast, West Coast gangster rap days of America. Okay? And in जी the recent times, you can see how they've been glorified and they have come into the music industry in India. Okay? And जी for a fact, because I'm from a music background, uh,
these rappers and most of these rappers, you'll be very shocked to know, are actually sons of all these mandi के जो very rich farmers है जो ये farmer protest में उतरे थे, and that's why जी so many of them were protesting against it. Please continue. जी हाँ, बहुत सारे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि लाइमलाइट में आने के चक्कर में घुसे हुए हैं। बहुत सारे हैं इसमें ऐसे भी। या आपको मैं क्योंकि आपने दिलजीत दोसांझ की बात की है, मैं लुधियाना से ही हूँ, और ये दिलजीत अच्छा, दोसांझ और एक और ऐसे सिंगर है, नहीं है उसका मेरे को नाम नहीं अभी याद आ रहा। ये जी। लोग ऐसे सिंगर थे जो कहते हैं ना, शटर वाली दुकान होती है ना, हाँ जी। वो शटर वाली दुकानों में ये लोग बैठे होते थे, और सुबह होता था इनका वो बैंड इतना होता था कि दे यूज्ड टू गो आउट फॉर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड जी, मैरिजेस वेडिंग्स एंड ऑल दैट डीजे के साथ। जी। I'm gonna, yeah, I think I'm gonna mute you क्योंकि थोड़ा सा background noise आ रहा है. I'm gonna just quickly mute. Okay. So basically ये उस तरह के लोग थे ये, और इन लोगों को literally उस टाइम पे, मैं ये बात कर रहा हूँ 1990s की बात होगी, 1995 उस टाइम के अराउंड की। इनको आप 1100 रुपीज के अंदर यू कुड हायर देम देयर इंटायर ट्रूप, वो जो बैंड वाले, और ये लोग मैरिजेस वेडिंग्स और गली के जो फंक्शंस होते थे उनके अंदर ये गाना गाने आते थे। ये वो सिंगर्स हैं, उनमें से अब एक दो ऐसे हैं दिलजीत दोसांझ जैसे जो बहुत बड़े सिंगर बन गए हैं, जो अब लिटरली पानी भी $1500 से महंगा का पीते होंगे, $1500 से। एंड दीज गाइस हैव चेंज देयर लाइफस्टाइल, और अब मैं देखता हूँ, अब मैं कैलिफोर्निया में हूँ, वही आयरनी कहें, फनी कहें, इसको जो भी कहें, दिलजीत दोसांझ जो है, ही इज मैरिड, ही हैज अ किड एंड ऑल दैट स्टफ, ही हिज वाइफ या उसका जो घर है वो भी यहाँ पर ही है, बे एरिया में। और आई डोंट नो मैं ये क्यों बोला, पर ये ना हो कल को अब मेरे को दिलजीत दोसांझ के साथ भी एसोसिएट कर दिया जाएगा। बट एनीवेज, तो दिलजीत दोसांझ यहाँ उनका जो घर है, it's like on a very nice place and all that stuff, huge house. I haven't seen it, but in his videos and all that stuff I've seen it. एंड सो दिलजीत दोसांझ का बहुत कुछ कनाडा यूएस में वो एंगेजमेंट है जो पैसों का होता है, जैसे भी होता है, मुझे नहीं पता वो कैसे कर पा रहा है, बिकॉज यूएस एंड कनाडा रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्पेशली टैक्स से रिलेटेड, बट वी हैव सीन इट। एंड उससे रिलेटेड और बहुत सारे सिंगर्स जो आपने जैसे बात करी, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स यहाँ सिर्फ कनाडा और कैलिफोर्निया में स्पेशली आते हैं टू मेक देयर वीडियोस, and I've personally seen them make those videos. They throw out money like anything. वो पैसा आता कहाँ से है इतना ज्यादा? अभी दिलजीत दोसांझ का थोड़ी देर पहले कोई गाना आया था, गोट या जो भी आया था, जो वेगस में एक एक कैसीनो में शूट हुआ है। Shooting a song in a casino means you're spending more than $500,000 for sure, क्योंकि कसिनो को बंद करना मींस या उसको लॉकडाउन करना फॉर वट एवर नंबर ऑफ आवर्स मींस लॉस ऑफ इनकम फॉर दैट। सो उसको कॉम्पनसेट तो इन्होंने पैसे देके ही किया होगा। तो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी which is being pumped to convert all these videos and all that stuff. So बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हम कर सकते हैं। Yes, Freeze, you want to say something? Also, I wanted to bring to people's notice that if you notice how these Bollywood people, they created their own multiple award functions, and they started revolving and giving the awards to within that circuit. Yeah. Now, coming very similarly, if you notice in the recent time, I don't know, it was Batsha or Hani or whoever, he had basically made fake accounts and got that Guinness record. Okay, so the Guinness record. So if you know why I'm bringing this up, this is very similarly how the same industry faked and made their khud ka apna hi Dada Saheb Palke award, which has got Exactly. nothing to do with the original one. Government one. Okay, Yeah. the government one. Correct. So, ठीक है. Now I'll give you another one.
There is one I Love Mumbai, and then there is the I Love Mumbai Foundation. Look how closely they kind of make it something around it. Yeah, They'll add an extra alphabet or an extra word. So to the general people, it looks like it is the one that we know it for so long. yeah, So this fakery has been going on, in especially because of the social media, because a lot of polls and a lot of stuff is on basis of likes and followers, but there is no real check if all this accounts are real or not, and that's how the voting system and these life is all but nothing of fake. I've saying this from my personal experience of there's DJ battles and war of the DJs. So I have the one that I had one in that we had to battle. So I have to battle in terms of scratching, mixing, or doing whatever. But in the last 10 years, and it is the same set and circle of people who initially got in over here. This called my favorite DJ.in. So it's the same nightlife industry. What they did is they started giving and deciding DJs, the best DJs of different genres, on basis of votes and going online. And but who knows how many are real and how many are fake. So this is the era and the phase where uh, Facebook likes, oh, he's got 10,000 likes, oh, he's got 5,000 likes, but nobody knows who are these likes. And then later on, as time passes, we come to know, oh, these likes are bought. This can be bought. Okay, so there's a lot of fakery going on. People should understand and realize that. Now, I just want to bring few points a little off the subject, but then it's kind of an update. Uh, uh, coming that day when you spoke about Pithani, so I was watching something in the recent times, and it is very shocking and surprising. Everybody should need to go and watch. So he's done three the most famous interviews that he did. One he did with Arnab, okay. Second he did with Navika. That's only Navika and him. The third one, Pithani is done interview is with Navika again on Times Now, but with Ishkaran and Vikas Singh is also there. yep, Okay, you have to check the way this guy fumbled. Okay, and there's a very fun. Like I'll ask you one question: if you are in a house, and this goes to everybody, and your malik, your brother, or your friend, or any member of your family is not opening the door, are you going to break open the door or wait for 2 hours? 2 hours, yep, 2 hours for a key maker to come. A. B. A person with whom you've been staying for quite a long months. In today's world, don't we know the difference between 5'8" and 6 feet? Because in that, very strangely, he said Sushant was 5'8". You know where is 5'8" and 5 and 6? It's like 6 is not the average height of an Indian, so वो yep. automatically tall हो जाता है. And that friend of Sushant, who was working from abroad somewhere, who was working with him on AI, he went on saying that I am 6 and he was taller than me. Correct. Okay, all right. And there Yep. are few pictures of Sushant with so many multiple designers, actors, and it is so clear. Sushant was not a guy to wear a lot of dingoes or boots with heels, if you know what I'm saying. Yep. Okay? Look at his height clearly. I And feel he people, was 6 or he six used one. to go out in those floaters जिसे कहते हैं ना, open end socks पहन के उस चप्पल में रहता था. That's how simple this guy was. He was not Hmm, wearing those high boots or high heel shoes. If you look at most hmm, of it, और अगर वो shoes पहनता भी था, so those are like sneakers जैसे होते हैं ना, flat उस तरह के. And absolutely, I mean, not only one person, there are so many people who interviewed some of the RJs also, right? Who interviewed them, these guys in their studios. They were also basically telling कि जब हमारे साथ स्टूडियो में आया था, I am 6'1", I am 6'2", or whatever, and he was almost close to my height. ऐसा RJs तक ने बोला है. So Pithani, of course, he was such an whatever idiot that he tried to say certain things जो factual.
मतलब तू कुछ और बात कर देता यार, उसके अफेयर के बारे में कोई झूठ फूट बोल देता, कोई लड़का लड़की रिलेटेड कुछ बोलता, तो भी बंदा कहता यार ये हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? आई मीन समथिंग दैट इज इन पब्लिक डोमेन, हाउ कैन यू फूल पीपल? एंड देन And and one more point. Again, I had spoken about this on yours, but please watch the entire Sardesai and Thai interview again. If I was Thai, if you were Thai, if something has happened to your partner with whom you were staying, uske, on his money to everything till a week before, if something has happened to him, आप उसके हाउस वाले को फोन क्यों नहीं करेंगे? yeah, एंड शी हैज क्लियरली सेड इट इन द इंटरव्यू विद सरदेसाई that I didn't call a single member of the house for one whole month. Anybody would call immediately Pithani or anybody saying कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया. But she herself is saying I didn't call purposely, and this is her own line. I didn't call purposely because in future I didn't want to come into trouble. This is her own sentence, her own line. Okay? With this, I will go and take sure. care. All the Thank best. you, thank you so much. Happy All right, Gudi Padwa again. Happy New Year. happy new Jai year. Hind, Jai Bharat. Bye. जय हिंद जय भारत। All right. Good to see you, वैभव। बहुत ही दिनों बाद, महीनों बाद। It's हाँ, good to see you. How are you? कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। All right. बताएं कैसे आप जो फॉलो कर रहे हैं, चल रहा है। What do you have to say? And especially around this guy we are talking about, इम्तियाज खत्री, इसके बारे में आपकी क्या पहला तो इंफॉर्मेशन? हम आपको कांग्रेट्स बोलना चाहें कि आप लगे हुए हैं, इस मैटर को शांत नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स है वो लोग चाहता ही खत्म हो जाए। Yeah. और 1 रुपए वाला वकील के अगेंस्ट भी हम एक चैनल खोल दिए अलग से कि उन लोग अगर कुछ करता है तो रिपोर्ट करेंगे। क्या बात सुशांत के लिए अलग पूरा चैनल खोल दिए हैं जिससे डाइवर्जन नहीं हो। और आप है। लोग तो लगे हुए हैं, आप लोग जितना काम करें उतना तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो फालतू का बकवास करेगा उसको रिप्लाई देने के लिए हम खोल दिए हैं। तो बहुत उसमें बढ़िया। और भी बहुत लोग को लाएंगे। और मेन अभी जो आप कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ लोगों की आंखों के सामने भी हुआ है। तो क्या पीठ पीछे हुआ है, कोई प्रूफ है नहीं है रिटर्न, वो सब तो दूसरा बात है। जो आंख के सामने हुआ है, जो सब कोई देखा है, उसको तो कम से कम एनालाइज करे आदमी। तो वो बहुत सही है, हो रहा है। और जहाँ तक बात रहा वो रैप इंडस्ट्री वगैरह का, तो रैप एक्चुअल में कल्चर है कि नेचुरल जो फ्लो होता है या कल्चर किसी जगह का वहाँ से इंस्पायर्ड होता है। और कोई बोल रहे थे शायद, जो हमारे साथ हैं वहीं बोल रहे थे कि गैंगस्टर कल्चर चाहे वो चले गए हैं शायद, तो सही में वो गैंगस्टर रैप कहीं कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, जो कि फ्लॉप हो जाए क्योंकि उस टाइप का कल्चर है नहीं वहाँ पे। यही प्रॉब्लम है। तो ये सही बात है, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। नहीं, एब्सोल्युटली। और वैभव, आप ऑब्वियसली आप भी बहुत देर से इन चीज़ों से रिलेटेड, और आपको भी बहुत टारगेट किया जाता है, वो तो एवरीथिंग इज नोन। बट अभी हम अगर टॉपिक से ही सिर्फ रिलेटेड बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज स्पेसिफिकली हम इम्तियाज खत्री के बारे में बात कर रहे हैं। आपने भी बहुत सारी ऐसे वीडियोस और इन्वेस्टिगेशन, आपने तो जैसे सुशांत के लिए भी आपने पूरा उनका इंस्टाग्राम, ट्विटर, शायद ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों ही किया था, राइट? आपने हाँ। तो आपने कभी किसी तरह इसका कर पाए हो, इम्तियाज का या पिठानी या किसी का, कुछ इनके बारे में इंसाइट्स आप शेयर कर सकते हो? इन लोग करेंगे, आने वाले फ्यूचर में हम लोग करेंगे एनालाइज पूरा, जितना भी पब्लिक है, जो ही पब्लिक छोड़े हुए है, और बहुत लोग छोड़ा भी रहेगा क्योंकि बहुत लोग तक वीडियो हो सकता है नहीं पहुंचे या फिर उन लोग इतना अवेयर नहीं हो। तो जितना भी लोग, उनका लिस्ट बना के हम लोग पूरा सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं। इसमें एक हमारे बहुत ही प्रिय 1 रुपए वाले वकील हैं, उनका भी कुछ पुराना ट्वीट मिला है जिसमें वो एंटी हिंदू, एंटी नरेंद्र मोदी, एंटी सब कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, सब कुछ हम लोग निकाल निकाल के लाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई नो, अगर हम उस चीज के बारे में भी थोड़ा, हालांकि सेशन तो हम खत्म करना चाहेंगे अगले 5 मिनट में, बट उसके बारे में भी अगर बात करें, आई एम श्योर आप देख ही रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते में जो चल रहा है, जिस तरह से भी चल रहा है। बट फाइनली लुक्स लाइक लोगों की थोड़ी, कुछ ज्यादा लोगों की आंखें खुल गई हैं। थोड़े से अभी भी हैं मंदबुद्धि लोग, और थोड़े से लोग जो अभी भी रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो आज डेफिनेटली लोगों की खुल गई है, सोच इसके अराउंड। उसके बारे में भी आप कुछ? उसका कुछ लीक हुआ है डॉक्यूमेंट, बिफोर वेट्स ग्रेस करके कुछ लीक हुआ है।
उसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि हम न्यूसेंस में ज़्यादा नहीं डिटेल में जाते हैं, और मेरा कैपेसिटी भी उतना नहीं है। आप जितने मैच्योर हैं, आप जितना झेल सकते हैं उतना हमसे झेलाता नहीं है। तो हम नहीं, मेन जो की पॉइंट है उसी को फॉलो कर पाते हैं, और आप राइट लोग कहीं देखते हैं कभी कभी तो अपडेट मिलता है बहुत जगह से। राइट बात है कि यह है कौन मैन, ये बहुत बड़ा धूर्त, बहुत बड़ा एक नंबर का लंपटबाज है या ये। इसके बारे में हम लोग बात भी किए थे कि कैसे निर्भया केस में भी बहुत घटिया रोल प्ले किया था, और कैसे वो जमानत वमानत जो मेन कल्प्रिट था उसको मिला था। वो सब वो विशेष समुदाय का जो भी था वो अलग बात है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। या यहाँ पे आप देखिए कि ये खुल के बोला था उस केस के बारे में भी कि हमको दिखा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, और बहुत उसको हम ग्रैब किए हैं, और इस केस में भी यही बोल रहा था। तो ये तो ओपन बोल रहा है कि हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। यानी कि अगर इसको यूट्यूबर भी बनना होता तो सिंपल ईमानदारी से बोलता कि हाँ हम यूट्यूबिंग कर रहे हैं। एक तो ये हीरो बन रहा है, अपने आप को बहुत जेम्स बॉन्ड का नाती बता रहा है, इसके पास सब डॉक्यूमेंट इसी के पास है। पूरा भारत में रॉ एजेंसी गधा बैठा हुआ है, एनआईए सीबीआई सब कोई कुछ है ही नहीं, सब इसी को डॉक्यूमेंट दिया है पीछे से। तो बात है कि सरकार या कोई भी इस टाइप का एक आदमी को कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि बकबक बोलने के लिए किसी का भी आजादी है, कोई भी कुछ भी बक सकता है। तो या जनता को चाहिए कि ऐसा वो करे ना करे। करेक्ट, आई नो। ओके, ऑलराइट, बट बहुत अच्छा लगा वैभव, आप एक तो आपको देख के इतने दिनों बाद, आपसे बात भी नहीं हुई, बहुत देर हो गई, तो और सोचा ऐसे आज नव वर्ष है तो, और गुडी बहुत पर्व बढ़िया, मतलब सेम ही एक चीज है, तो ठीक बिल्कुल है बधाई देने के लिए सोचे कि आज जुड़ जाए सबको। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आते रहा करो और हमें भी बुलाते रहा करो, हमें भी अच्छा लगता है। अभी हम ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों में आपको तो लाइक क्या छुपा है, सब, और किसी से भी क्या छुपा है जो पब्लिकली होता है और ट्विटर पे जो होता है और अदरवाइज जो होता है, तो एवरीथिंग डेफिनेटली कीप्स मी बिजी, नो डाउट अबाउट इट। बट अपने लोग हमारे जो साथ हैं, सबके साथ हम हमेशा वैसे ही हैं, तो आप भी आते रहा करो, हमें भी पहले सोचे थे कि इस पे रिप्लाई किया जाए नहीं किया जाए, फिर है कि ये तो हम लोग का एक कर्तव्य भी बनता है कि जो झूठ फैला रहा है उसके बारे में बोला जाए, क्योंकि अगर इस मिशन से हम लोग जुड़े हुए हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत से, या और इसी से बहुत सारा चीज रिलेटेड है, तो या ये हम लोग का भी एक रिक्वायरमेंट है कि जो फेकरी फैला रहा है उसके बारे में बोला जाए। क्योंकि करेक्ट, जब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में कोई भी बॉलीवुड एक्टर वगैरह के लिए नहीं हम लोग छोड़ते हैं। हाँ, ये इसी चैनल पे हम लोग करते हैं, इस पे आपको भी बुलाएंगे जल्दी, बहुत तो TVTSIL। तो अगर हम लोग इतना बड़े स्टार या किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर ये सब कौन है, ये सब कौन है, ये सब जो बदनाम खुलेआम जो बदनाम किया है, इसी को समझने का आवश्यकता है कि ये सुशांत भैया को गाली दिया, ये पीछे में मेरे छोड़ना चाहा अपना एजेंट, सब इसको लगा कि मेरे पीछे हमको तंग कर देगा, अच्छा, उल्टे इसको भारी पड़ गया। तो बहुत ही इन लोग तमाशा कर रहा है, हम अलग काम में लगे हुए हैं, हम अलग चीज कर रहे थे, तो इन लोग जबरदस्ती हमको इतना इतना टोका कि फाइनली हमको चैनल खोलना ही पड़ा। हम बोले ठीक है, रिप्लाई लो मेरे से। और इन लोग का फ्रॉड इतना बढ़ चुका है कि इनको टारगेट करना आवश्यक है अभी, क्योंकि ये ऐसा फ्रॉड हो चुका है जो नेशनल स्केल पे भी हो चुका है अपने आप में। ये आदमी रिपब्लिक पे जाके रिपब्लिक का सहारा लेके रिपब्लिक को ही बदनाम कर दिया था, रिपब्लिक चैनल को। या तो ये मेन प्राइम टाइम न्यूज चैनल में भी आ चुका है, इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है, या और ये बहुत बड़े बड़े चैनल पे भी फ्रॉड इंटरव्यू दे चुका है, ये समझना चाहिए। बिल्कुल, नहीं करेंगे ऑब्वियसली। ये इस हमने डिसाइड भी किया था कि अपने हर सेशन पे इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ही वेस्ट करेंगे। आई थिंक वो हमने इसको दे दिया फुटेज, उतना माइलेज इसके लिए काफी है। बिफोर वी एंड द सेशन, ऑफ कोर्स वैभव, बार बार अब लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा है नया चैनल, तो TVTS IRL है, आप TVTS सर्च कीजिएगा, बहुत सारा चैनल है, हिंदी हम लोग लाइव डेली करते हैं, इंग्लिश वाला भी है, क्लिप्स भी है, और एक IRL का नया चैनल है, यही 3-4 IRL चैनल है। का फुल फॉर्म भी बता दो हमें। इन रियल लाइफ उसका होता है। क्या बात है, ओके। तो गाइस, एक और चैनल जिसको डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए, TVTS IRL। तो डेफिनेटली मैं भी अभी जाके फटाफट देखता हूँ, करता हूँ। मैं देख तो रहा था, कुछ नई नई चीजें आ रही हैं, बट अभी अनफॉर्चुनेटली मैं अपने ही वीडियोस को नहीं संभाल पाता, तो अभी मैं औरों के शो और चैनल पे तो बिल्कुल ही नहीं जा पा रहा नहीं, था। हम लोग को मेन इसीलिए हम आज जुड़े हैं ना, कि जो भी लोग देख रहा है, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी जो अपोजिशन है, जो भी डाइल्यूट करने वाले लोग हैं, उसको अभी वो लोग फुल अभी एक्टिव हो चुका है। अब हम अपने चैनल पे भी ये क्लियर किए थे कि ऐसा बहुत लाइकलीहुड है, सुनने में आ रहा है कि ये जो 1 रुपया वाला वकील है, इसको वाजे सेट किया था कथित रूप से,
कि जाके इसको डाइल्यूट करो पूरा केस को, सोशल मीडिया हर जगह फैलाओ अफवाह। तो ये अफवाह फैलाने के लिए छोड़ा गया है। और वाजे का आपको पता ही है, वहीं तलोजा जेल में वापस हो जा चुका है। तो क्या पूरा सर्कल क्या बन रहा है, पूरा पिक्चर ये भी देखना है। बिल्कुल। ऑलराइट, 2 घंटे का मार्क हो गया है। सो बिफोर आई एंड द सेशन, एनीथिंग लास्ट? वैभव, आपसे शुरू करते हैं। हम यही बोलेंगे कि सबको नववर्ष का हार्दिक शुभकामना। और जो भी बाकी प्रदेश में आने वाला नववर्ष है, जैसे हो सकता है बांग्ला नववर्ष कुछ दिन में आए, और भी किसी रीजन में थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन मिला जुला के इसी समय होता है। तो सबको हार्दिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यही हमको बोलना है आज। और ये जस्टिस को कंटिन्यू आप लोग रखें, डाइल्यूट नहीं हो, डाइवर्ट नहीं हो। प्लेटफॉर्म फॉलो करना है, फॉलो कीजिए सबका, लेकिन बात सुनिए जहाँ पे सही बोलने का कोशिश किया जा रहा है। और इसी में प्रोपोगंडा में थोड़ा कम फंसिए, हम लोग वहीं ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को नैरो रखना बहुत ज़रूरी है, टू दी पॉइंट। क्योंकि अगर तलवार का धार कम हो जाता है तो उससे वार नहीं होता है। वैसे ही मूवमेंट में अगर डाइल्यूशन आ जाता है, बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी आ जाता है। हम कॉन्स्पिरेसी भी बताए थे, और ये भी डिस्कस किया जाएगा दोनों प्लेटफॉर्म पे। हम चाहे इस प्लेटफॉर्म पे भी हम लाइव जब आएंगे, क्या क्या कॉन्स्पिरेसी वो डालने का कोशिश किया है। और बहुत लोग ये नहीं समझ पा रहा है कि वरुण सर का एक काम है होस्ट का। तो कंट्रोवर्सी आप देखिएगा तो बहुत लोग अलग अलग टाइप के लोगों से भी इंटरव्यू करता है। तो यही काम होता है कि फ्रॉस्टर का कोई सच्चाई या झूठा जो उसका पार्ट है वो निकले बाहर। तो हम आपको ये देखना चाहिए कि आखिरकार इसी चैनल पे वो आके उसका भांडा भी फोड़ हुआ है। तो ये सब आपको समझना है। अगर यहाँ पे इस चैनल पे उसको नहीं बुलाया जाता तो हो सकता था वो खुलेआम निकल जाता छूट के। तो ये सब डिटेल आप समझिए थोड़ा बहुत। और हम लोग का मेन, आप हो सकता है 10 में से 4 बात पे अग्री ना करें, लेकिन वो मतलब नहीं है। बात है कि हम लोग को जो मेन पॉइंट है उसे फोकस रखना है। क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरा इलेक्शन का हल्ला चल रहा है, इलेक्शन ही इलेक्शन चल रहा है। रवीश कुमार ये सब बकवास यही सब चल रहा है, लेकिन मेन मुद्दा सब जो होता है वो भले ही बिहार में बिहार बंगाल के बॉर्डर पे विशेष समुदाय द्वारा पुलिस का किलिंग हो, या फिर कोई और बड़ा इशू हो, वो सब मेन स्ट्रीम में नहीं आता है। और सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत भैया का जो केस है इसीलिए एपिक है, क्योंकि इस टाइप का बाइंडिंग फोर्स हमको अभी तक नहीं दिखा है, बचपन से लेकर अभी तक किसी भी एक मुद्दा पे जो इतना लोग यूनाइट हो वर्ल्ड वाइड, खासकर इंडियन डिसेंट का जितना भी लोग है। और अभी के समय में ये बात हमको बस लग रहा है कि इस मोमेंट को हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पूरा मुंबई क्लीन अप होने का चांस है। राइट, एब्सोल्युटली। एंड मूवमेंट को तो खत्म नहीं होने देंगे जब तक पॉसिबिलिटी है। अब तो लगे रहेंगे। ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस, उन चैलेंजेस को फेस करते रहेंगे जब तक चलता है, चलाएंगे और लोगों को अवेयर तो जरूर करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। चाहे वो लाइव सेशन से हो, चाहे ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, रियली डजंट मैटर, प्लेटफॉर्म डजंट मैटर, बट द पॉइंट इज कि हमें इसको कंटिन्यू करना है जेन्युइनली। एंड सो थैंक यू वैभव भैया, आप भी लगे रहें, एंड हम सब एक साथ मिलकर करेंगे। गुरप्रीत, एनीथिंग एल्स आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। बस मुझे वही है जो पहले मैंने कहा था कि जो शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप प्लान करके क्या क्या एविडेंस हुए हैं, क्या इंसिडेंट हुए हैं, इनको समराइज करते हुए चलेंगे। तब हम जो मूवमेंट थोड़ा आगे से ढंग से लेके जाएंगे, तब हम ताकि बोलने के लिए कुछ रहेगा ना हमारे पास कि शुरुआत में नेक्स्ट ये हुआ और हम इस स्टेज में पहुंच के ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट वीडियो। मैंने वो वीडियो देखा भी है, किया है। हमें ऐसे वीडियोस और एको कर रहा है। ओके, तो वी विल कंटिन्यू टू इवन सपोर्ट अदर चैनल्स, जैसे कि एस मीडिया है, वैभव तिवारी हैं, दुबई तमीजान है, ऑल दीज चैनल्स, डेफिनेटली गो सब्सक्राइब एंड देखें। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर इशू को नहीं, मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल डिस्कशंस होते हैं, और कई बार वन साइडेड भी हो चाहे, तब भी these are good sessions. So please definitely continue supporting each one of us, I would say. All right, Freeze, you joined back. I think आप कुछ कहना चाहते थे? Yeah, I just want people to understand and realize, and I had posted this some time ago on Twitter, that please also
completely, I would say completely boycott these news channels also. Look at when Arnab's just chat had come out. Okay, all these other news channels had made prime time and they had debates over and over and over, and they were running it whole day. And now, when he's completely it's vindication. He's been vindicted of most of the cases. Nobody wants to talk about it. So look at how they had targeted Arnab, all of them, including the news channels. Secondly, coming to Vaze, people need to go and find out about this guy called Sashi Thorat, who is actually Vaze's friend, who joined the force with him, okay, and who was also in the police force. He is now come out on multiple news and small time standalone news channels and platforms, where he is clearly saying that his relation and his connection with the political party was straight up with the high command, if you know what I'm trying to say. Oh, Okay. really? Okay. Secondly, yes, he openly is saying it because he's best friend, and not just that, he's clearly saying that 2 days, 2 days, 2 days before he was arrested, he has spoken to Vaze. He has spoken to Vaze, and Vaze told him the same thing, that he is gonna be now get arrested, and ये जितने भी उनके टॉप के जो पॉलिटिकल बॉसेस थे, ये सब उसके ऊपर अभी सब ठोकने के पीछे लगे हैं. सेकेंडली, काकाजी, the same जूलियो फ्रांसिस रिबेरो, the ex top cop of Mumbai, जिनको बोल रहे थे कि इसको ये केस investigate करने दो, he is also now openly coming and every platform and saying how he's saying the reinstating of Vaze is just not possible by the commissioner. It has to be by the HM or the CN. He's clearly saying that on every platform. So please solve, go check it out yourself. Julius Francis Ribeiro. He's going on many platforms and he's saying that this appointments and this direct reinstating and then becoming the crime investigating unit ka jo head hai, is not possible without the top minister in the government at that moment. Thank you very much. Gudi Parva to everybody once All again. right. See you. Thank you. You're leaving at a good point. Thank you so much, Shrees. अरे ये पूरा गवर्नमेंट चोर का गवर्नमेंट है, बहुत सही बोले हैं पूरा. हाँ. इसमें बोलना क्या, बोरा कमेटी रिपोर्ट पड़ा हुआ है, सब कुछ है. I think ये भी कभी एक कभी मजाक लगता है हमको, सीरियसली कभी कभी जोक लगता है. भारत मतलब इतना डायनामिक नेशन, सिविलाइजेशन. अभी अभी हम रिपोर्ट में कवर किए हैं कैसे खाली ब्रिटेन का गवर्नमेंट 45 ट्रिलियन उठाया है इंडिया के वेल्थ से, और यूएसए का ईयरली जीडीपी 4 ट्रिलियन है. कहाँ 4 ट्रिलियन यूएसए का जीडीपी और 45 ट्रिलियन बस ब्रिटेन उठाया है. फ्रांस का, पोर्टुगीज का, डच का छोड़ दीजिए आप. बहुत लोगों को ये भी नहीं पता यूएस का जो यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, वो भी इंडिया के कलकत्ता के लूट से बना है. थोड़ा रिसर्च करना चाहिए सब लोगों को. जोक चल रहा है वहां पे, इतना बड़ा केस हो जाता है, हाई प्रोफाइल. मतलब ये सब रैंडम इशू है, बट स्टिल अच्छा है कि कम से कम आप लोग लगे हुए हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंस ये भी इसलिए है क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल, एक तरह से लाइफलाइन आप बोल सकते हैं, वो उसको क्लीन होना बहुत जरूरी है. नहीं तो वो अगर बीमार रहेगा तो पूरा इंडिया का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम बर्बाद रहेगा. और ये बहुत ही क्लोजली देखिए कि बोला गया था कि इसका क्या बोलते हैं, जो अभी आपका कमिश्नर था जिसको ट्रैफिक पुलिस कहाँ पे होमगार्ड या कुछ बना दिया, परमवीर सिंह नहीं, क्या नाम है उसका, जो एक्स कमिश्नर था मुंबई का, परमवीर सिंह ना. परमवीर तो अभी जो अभी निकला एक्स हो गया है, अब वो एक्स हो गया है. हाँ, तो उसका आप पूरा देखिए कैसा रोल रहा है, किस तरह का रहा है. राइट. वो सब चीज आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा. होमगार्ड, हाँ होमगार्ड, सही बात है. होमगार्ड में उसको भेज दिया गया है. उसके बाद वाजे का आप देखिए पूरा कनेक्शन, ये सब चल रहा था. आंख के सामने सब कुछ चल रहा है और हम लोग को भ्रमित किया जा रहा है. उल्टा फुल्टा कहानी है, कॉन्स्पिरेसी लाके. हम बोले ना बस एलियन थ्योरी लाना बाकी रह गया, नहीं तो सब कुछ आ चुका है.
एलियन थ्योरी कुछ दिन में आएगा और ये भी बोल सकता है वो कि सुशांत को मंगल ग्रह पे एलियन ले गया वहां पे। कोई ठीक नहीं उसका उसका कोई ठीक नहीं है। जिस तरह का बकवास वो कर चुका है आदमी, और इडियट इतना बड़ा है उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। वो बहुत बड़ा साइकोपैथ है, हम बता रहे हैं। नार्सिसिस्ट साइकोपैथ पर्सनैलिटी है उसका। ऐसे लोगों को ही नहीं समझ में आता कि उन लोग क्या गलत कर रहा है, सोसाइटी के लिए क्या सही कर रहा है। उन लोग बस दिखाता है, और यहाँ पे खुलेआम उसका आप क्या देखिएगा, उसका फंडिंग भी मिशनरी से है, कम्युनिस्ट से है, किसका ये अब डाउट आ रहा है। और उसका आप अटेम्प्ट देखिए, हर चीज अजीब अजीब टाइप का रहता है, और खुद अपना सामने में पॉइंट रखता है, तब भी लोग पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पाता है। तो ठीक है, नहीं पकड़ पाता है तो हम लोग वही एनालिसिस करने के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। एनीवेज, बट उसके ऊपर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आई थिंक वन लास्ट पर्सन हु वांटेड टू जॉइन, ध्रुव, वेलकम। एंड क्या बोलना चाहेंगे इस टॉपिक से, एंड द लास्ट क्लोजिंग कमेंट? The closing comment, there is no closing comment. It will give a new dimensions to a lot of people. Imtiaz Khatri, based on the latest reports, what we have is hiding in Bali. Okay. Imtiaz Khatri, from the day one, has strong connections with everyone. Isha Ambani's wedding. Who was cited there? Virat Kohli's wedding. Who sponsored the wedding? And the party on 13th was not the conch blower for Sushant's thing. The exact incident happened on 12th of February. Go back, do your own research. I will not give any more statements anymore. Do your own research and find out what went wrong on 12th of February and how did what is his name? Imtiaz Khatri get in touch with Sushant Singh Rajput. What exactly happened? And I was following the chat. I did not want to come online today. Someone just said that Sushant and Riya had compromised. Sushant never compromised with anyone. And on the stun guns, 9th of June 2020, 2020, right? Yeah, 2020. 9th of June 2020, Anil Deshmukh's PA was sighted outside Sushant Singh Rajput's house. If the information what I give did not make grounds, why has the CBI called Anil Deshmukh's PA? If the CBI has called Anil Deshmukh's PA to verify on the 100 crores payment made, Vaibhav Ji is online, who's having so vast knowledge. You can cross question with him. The ED should have called him for a financial fraud, not the CBI. Now, if you people understand what I'm hinting to, you'll get the whole picture. Say that one more time. एक बार और बोलना। 100 crores के स्कैम का 100 crores का परमवीर सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग के लिए सीबीआई ने क्या बोलते हैं उसको अनिल देशमुख के पीए को बुलाया है। ओके। जब भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन का मैटर आता है, इट इज द ईडी व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर. सीबीआई हैज टू गिव अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट व्हिच इज ऑलरेडी सबमिटेड. सीबीआई हैज टू ओनली फाइल द चार्जशीट नाउ. फिर अनिल देशमुख के पीए को सीबीआई क्यों बुलाएगा? हमको लगता है हम लोगों को इसके बाद एक और चीज फोकस करने चाहिए, स्पेशल कमेटी फॉर्मेशन। ये केस को हमको और ब्लो अप करना होगा हम लोगों को, और बस इससे नहीं चलेगा काम कि सीबीआई उठा लिया। अगर सीबीआई स्लो है तो हम लोग को फ्यूचर में ये भी पुश करना होगा कि स्पेशल कमेटी बने इस केस को रिजॉल्व करने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत का रिलेटेड जितना भी मर्डर है। बस ऐसे ही काम नहीं चलेगा कि सीबीआई अगर आ गया है तो आज करेगा कल करेगा। हम लोग को फास्ट ट्रैक पे लाना होगा, क्योंकि तीतर बटेर का स्टोरी बहुत फैल रहा है। जैसे हम बोले, विभोर आनंद छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शन मत समझिए, वो सिंगल हैंडली बहुत तमाशा कर रहा है। वो एक नंबर का खत्म आदमी है, उसके कारण बहुत सारा तमाशा हुआ है। हम लोग को टारगेट करके कमेटी फॉर्मेशन करवाना होगा। जितने पॉलिटिशियन इन लोग को टैग करके या फिर प्लेटफॉर्म से बुला के या जैसे भी वो बात करके या ट्वीट करके, जो भी होता है। वैभव भाई, हम आपसे एक दो सवाल पूछ सकते हैं क्या? पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 सर, असत्य मोचन जो विभोर आनंद ने शुरू किया था, उसका पेमेंट किस प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट हुआ है? हमको नहीं पता। उसका पेमेंट इंडिया अगेंस्ट बायस न्यूज प्लेटफॉर्म, बायस मीडिया, उस प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट हुआ है। असत्य मोचन का बैंक अकाउंट था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं सर? रिटोरिकल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? आपको जब पता है तो बता दीजिए ना।
ऐसा बताना का नहीं है बड़े भाई. सी आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, आई रिस्पेक्ट वरुण अ लॉट. एंड इफ समवन आफ्टर वरुण, इफ समवन हु इज ऑन पेज विद वरुण, जो सत्य बाहर लाते हैं ना, वो आप है. मैंने सोचा था आपने इसके ऊपर रिसर्च किया था. आई एम सॉरी. मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा इस बंदे के बारे में. तो आई आपको हैव जब पता है, आपको जो स्टेटमेंट देना दीजिए ना, हमसे रिटोरिकल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? आई एम सॉरी सर, मैं रेटोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था. आई जस्ट वांटेड टू गेट दिस मैटर टू योर नोटिस. मेरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बंदा अरेस्ट कब हुआ, कब बाहर आया, और उसके बाहर आते ही कौन सा केस खुला और किसका जजमेंट इमीडिएटली निकला, ये जरा गूगल कीजिएगा. I will not tell it on today's show. I'll come back for another show and speak on this. Because the lawyer who was involved in getting Vibhor Anand bail, who is he? Whose cases has he fought? What has he done? And coming back to Ria's connection with Imtiaz Khatri, I am sorry, Varun Bhai, today I did not find time to come live on your show and speak. Let's have one more show on this. Exclusively this show. I don't know if you want, if it is good if you do it. The choice is entirely yours. Let's have this show only around drugs. Because Danish Chikna gets arrested, another aide of Dawood gets arrested. And once Danish Chikna is arrested, Anil Deshmukh's PA is called. You see the link of connection and see the cobwebs around it. I am not taking any shots on anyone. I will go very silent from now for some time. But when I come back, I'll come back with a lot of information for everyone. And my closing statements for people today is keep your eyes, ears, and heart open, but give work to your brain. Yeah. Thank you. All right. Thank you so much. एक चीज मैं जरूर, ये लास्ट क्वेश्चन या लास्ट कमेंट है जिसको मैंने स्क्रीन पे भी रखा है, and उसके बाद I'm gonna end the session. Why is nobody debunking VS theory from yesterday about Priyanka? You know, 50,000 theories आ रही हैं. GT, we cannot just sit and एक ये चैनल इसलिए तो मैंने बनाया भी नहीं है कि मैं वहां बैठ के एक थ्योरी, एक नैरेटिव जो आ रहा है उसको डिबंक करता रहूं. हम एक ओपन चैनल बना दिए हैं, TVTS IRL. उस पर जिसको आगे जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए, क्रॉस चेक जो करना है. परफेक्ट. और वहां पे आके दिमाग खाइए, जितना खाना पूरा ये क्लियर होगा. और यही बोल रहे हैं सर, इसको हम लोग को ले जाना होगा कमेटी फॉर्मेशन में. ये सब बकवास ठीक है, जो भी हुआ है सो हुआ है. इस तरह से इधर उधर रनिंग अराउंड द बुश हो रहा है. बस 10 आदमी के बारे में चर्चा करो, उसके बाद ये करो वो करो. Right. No, absolutely. So just to close that, have you tried to stop Bhaskar? किसी को रोक तो हम वैसे भी नहीं सकते, ये इस तरह का क्वेश्चन ही लॉजिकल नहीं है. Nobody is being stopped, nobody is being asked. भास्कर क्या करके आए हैं, मुझे I don't have all the details, या वो क्या बात करके आए हैं या क्या उन्होंने शेयर किया है, but he is more than welcome at any platform, जैसे कि बाकी सब लोग हैं. And so I really don't have the time and the liberty to waste my time and people's time on debunking all these issues. और जो आपने अभी ये बात करी कि दिल्ली वाला, आप बेसिक, मैं हर बार लोगों को कहता हूँ, कॉमन सेंस तो चलो कहते हैं ना, शायद कॉमन सेंस तो कॉमन नहीं है, बट गूगल बहुत कॉमनली अवेलेबल है. आप सिर्फ गूगल में वो चीज डाल के देख लें, आपको डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी. आपको एक वरुण कपूर, आपको एक वैभव तिवारी, आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ चीजों को डिबंक करने के लिए. आपको दिख जाएगा 8 तारीख को क्या हुआ था और 9 तारीख को सुशांत कहाँ था, एंड ऑल दैट स्टफ. यू विल गेट टू नो दैट. सो यू विल हैव ऑल द डिटेल्स. बेसिक बात है, पॉलिथीन में आप प्रूफ गैदर कर रहे हो इतना बड़ा केस का, तो जनरल पब्लिक का केस क्या होता होगा? पॉलिथीन में लिटरली है, उसके बाद जाके पूरा चूना पॉलिश सब हो रहा है, इधर नौटंकी चल रहा है. तो खुलेआम यहाँ पे आप देखिएगा, दुनिया भर में अलग अलग जगह पॉलिटिशियंस भी सब में केस हो जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वगैरह के लिए. अभी तो बहुत सारा कंट्री अगर रहता तो पॉसिबिलिटी इन लोग जेल में रहता. भारत में भी ऐसा नहीं क्राइम के अगेंस्ट नहीं होता है बड़ा बड़ा हाई प्रोफाइल भी. इन लोग को पकड़ना जरूरी है, और इन लोग अब गिरफ्त में आ रहा है तो इन लोगों को प्रेशर बनाना जरूरी है. तमाशा चल रहा है, स्टेट चल रहा है, नौटंकी चल रहा है. सही बात है, नौटंकी इज द राइट वर्ड. ऑलराइट, सो आई वाज अबाउट टू एंड, बट एम रेखा जी, आपने पहले भी ज्वाइन करने की कोशिश की और आप मैसेज भी कर रहे थे. प्लीज भूपेश जी को आई विल डेफिनेटली ट्राई, बट एनीथिंग एल्स यू वांट टू से?
Yeah, sure, Varun. So thank you for the opportunity. I'm really sorry I'm not taking the camera on today because I wasn't prepared to come online. No So worries. please bear with me. Sure. I would genuinely and truly want to appreciate the effort that you've put into this entire journey. And I'm saying this from the bottom of my heart. It means a lot. It means so much. You educate us so much. And I appreciate the kind of effort you put in after all the work, family, and you try and bring in the best. And you do it in such a dignified way. So kudos. I also want to tell you, Varun, that we are not the only ones in India watching you. I have friends in California, I have friends in UK, London, across the globe, Dubai. I talk to them constantly, and let me tell you, the entire world is watching what's going to happen with the Sushant case. So anybody who thinks they would want to get away with the fact that it was a suicide or nothing ever happened, we are not fools. And all those people who want to stand with those who are saying कि कुछ हुआ ही नहीं, ये तो suicide था, मैं कहना चाहूंगी कि कल को जब आपके साथ होगा और दुनिया यही बोलेगी तो हम भी खड़े होकर हंसेंगे, because high time everyone stood up and came up. I've been urging constantly on the show and requesting you to get Dr. Bhupesh, because मैंने उनकी एक वीडियो देखी, आज मैं लिंक शेयर करने की कोशिश करूंगी. उन्होंने कहा है कि जैसे वो काफी कनेक्टेड हैं एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस. और एक बात डॉक्टर भूपेश की, बिफोर आई कम टू दिस पॉइंट, इज बहुत ही पहले उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया से फोरेंसिक साइंटिस्ट को बुलाया था, जिन्होंने खुद से ऑफर किया था, वो भी इंडियन थे, और उन्होंने खुद से ऑफर किया था कि अगर सीबीआई ये केस रिजॉल्व नहीं कर पाती है तो एट माय कॉस्ट एट माय expense, I am willing to get multiple other forensic experts from around the world at their cost, and we will solve the case for you. Give it to us. And we are authorized to do that. So I want to request the government of India, I want to request CBI that if in case, I have full faith in them, I have full faith in my government, I have full faith in my agencies, but if at all, asking help is nothing wrong. There are people who are confidently saying that this is a murder. Then let's ask for help. Let's have them That in. this is you are presuming that the agency is not capable enough. That is not the point I here. never said that. India has best quality. One second, madam. India Sorry. has best quality. No, 1 second. Sorry, you're One misunderstanding. second. Sorry, And you have to take the counter also. Please understand another perspective of it. Worldwide agency, no one can come and interfere in India's internal matter. India is competent enough. Agencies have the capability. Thing is intent. If intent is missing, even the external agency can't do anything when they come inside to do anything. And so, sir, this is before not done in any sovereign, respectable nation. They don't invite any foreign agency to do a certain kind of investigation. This again will be a diversion. We don't have to focus on all these issues. This is not possible actually. It's very dreamy kind of idea. This will not happen. As simple as that. Right. So I understand practically, there is some possibilities. I think, Rekha, if I get your name right, there are certain practical things that can happen, certain things that cannot happen, and of course, this is a high-profile case, anyways, irrespective, high profile or not. I don't. I okay. Looks like she dropped off. So basically, Rekha ji, if you can join back, but I think I understand your question and where it is coming from, but looks like, since this is with the most highly reputable agency, I think that's how it will have to go. And yes, even though personally I would have felt, okay, thankfully she's back. Hi. hi, Right. sorry. Thank you for bearing with me. You're cutting in and out, Rekha. You're cutting in. We can't hear you. You are cutting. We can't hear you. At least I can't hear you at all. I think there's some network issue, so not able to hear you. Maybe if you could disconnect and come back again, we can try one more time. But unfortunately, we are not able to hear you. Okay. I see another. All right. Let me take this off. Hi, Rekha. Can you hear us now? Or Really, really sorry about
Yeah, Rekha, still not able to hear you. This. Okay, not able to hear you again. Um, See, all I want. okay, yeah. Rekha, I know you're talking, you're saying something. We are getting a little noise and then you're gone again. I think, I don't know, there's definitely some network issue. या तो आप chat में लिख दें and we can take it up, but we can't hear you. All right. I see. I'm going to take the last one, guys. I really cannot take everyone. Noshaji, please let's do it quickly. Hey, hi. Yes, sir. Happy festival to our country, both to Varun Tiwari and to Varun. Thank you. Same to you. Vaibhav, you are rocking, and you are the torchbearer, Varun Kapoor. So this movement should revive. Seriously, I am not joking. I have stuck by you. I have stopped watching Style Rug. I have stopped watching Bogart. I have stopped watching even that connecting the dots. You are the only person I am watching. I'm not even watching Ishkaran Bandari. I'm not even watching much of Ujjwal Trivedi. Ujjwal Trivedi sometimes, yes. I think you are the only person I'm really following. And Vaibhav Tiwari, I listen to his news, but I'm not getting a chance to, leave comments to his news channel I because they will are add you, only sir. I for. forgot. I will add you. I will take your number from Varun. I lost my cell phone and lot of contacts. Yeah, I seriously want to contribute towards both of the channels on the background. I don't want to be on the forefront. sure. No, I think you guys even if are you come in the doing good. forefront, that's I'll also good. connect with you. I'll connect with you. No, seriously, Yeah, because Sushant has become dear to me only after connecting with you guys. Looking at you guys staying out of the country and dedicating and devoting so much to Sushant is a very big thing, phenomenon. It's a great phenomenal thing to contribute so much. How many guys in India are doing this? Honestly speaking, I have not seen Dr. M. Padma for a long time. She was also sounding good, but she's also disappeared. okay, Noshaji, 1 minute, 30 seconds left. क्योंकि मैं 2:30 से Yeah, ऊपर तो जाऊंगा नहीं आज. I was hoping 2 hours, yeah, but yeah, 2 yeah. hours, 30 minutes. I'm gonna end this I came session, but only to yeah, I came only to say thank you to both of you no, guys. I could thank you, have sir. joined in about 1 hour ago. Actually, Oh, I really? just came for the purpose of thank you. Okay. No. Thank you so much, Noshir ji. I know you are one strong supporter. आप चाहे front end आए ना आए, we know you are there in the back end. You're always doing it. आप चाहे मैं Facebook पे And भी देखता हूँ. You are, I think, more how much active on Facebook. I don't know how much you will trust or believe me when I say that there were times in my meditation, Sushant has tried to communicate with me. Wow. This does not happen on the verbal side. It happens on the silent messages that you receive. You feel that the person is here. Like sometimes when you are doing some work and some of your relatives stand behind, if you are sensitive, you will turn around and see who's come, right or wrong. Yeah. Similarly, when a departed soul tries to communicate with you, you feel the sensitivity behind you or around you. Even though there is no verbal communication, there is something Yeah. लगता है freeze हो गया है. Right. Looks like सबका network issue हो रहा है. Okay. So guys, Close करते हैं sir. Close कर दीजिए कोई दिक्कत. yeah, close करना ही पड़ेगा. Okay, हाँ. he's back. Okay. yeah. So Yeah. that's about the whole thing. ओके, थैंक यू सो मच अगेन नौशर जी. मैं एक चीज फिर से रिपीट करता हूँ, गाइस थोड़ा सा जल्दी आ जाओ ताकि आप लोग अगर बात करना चाहते हो, आई कैन टेक यू इन राइट नाउ. एवरीबडी इज नाउ सेइंग कैन आई जॉइन फॉर 1 minute. ओके, प्लीज जॉइन ओनली फॉर 1 minute. यस, प्लीज लीना जी. Hi. Vaibhav, Varun, nice to see you both.
और आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म कि मेरा क्लोन जाके किसी और बहुत बड़े लाइव में जाके आया, मेरा क्लोन, just to see what is going on there. Oh, really? Okay. Okay. Yeah. नहीं, I एक just बात हम wanted to क्लियर get a कर दें, feeling. एक बात छोटा क्लोन तो अच्छा बात है, जिसको जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है सबको जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि हाँ, बिल्कुल एंड गोल है आप ही लोग के लिए, हम लोग ये कर रहे हैं कि आप ही लोग का डाउट क्लियर हो, या कुछ भी डाउट है तो सबका क्लियर हो। Yeah. हम लोग कोई मतलब नहीं बिल्कुल कंटेंट बना रहा है, कुछ भी बनाए, जो बोलना है बोले। Correct. बिल्कुल वेरी गुड। See, and there are, I will frankly tell you, there are some good people with him. So पता नहीं वो क्या है, लेकिन मैंने तो मुंह पे बोल दिया कि I have things with against you, but still I have come because there are some good people supporting. Really they are. We should not deny that. So मैं just बोल रही थी as a joke कि मेरा क्लोन जाके आया उधर. Just to get that feel. Acha, forget about that. We won't talk about that. I'm talking about this today's session. It was like stun gun and all that information was really good, because normally we don't get to see all that, or maybe we won't go and search and something. So that information was really good. And दूसरी एक बात है कि आज ही की न्यूज है अभी सुबह की कि द एनआईए के जो जिनके अंडर ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो जो काम कर रहे हैं उनका तबादला कर दिया गया है मिजोरम में। आई थिंक मिस्टर शुक्ला, आज सुबह की न्यूज है। तो ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा अभी, मतलब आज सुबह की ही न्यूज है। वैभव और एनीबडी कैन कंफर्म। मिस्टर शुक्ला है, मैं फर्स्ट नेम भूल गई, लेकिन उनका जो एनआईए के हेड थे, जो ये अभी जो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वाजे का, वो सब तो वो हेड कर रहे थे, तो उनका तबादला अचानक से कर दिया गया है, और वो भी मिजोरम में। Okay. तबादला तो परमवीर सिंह का भी हुआ है। So ना बट एनआईए के हेड, एनआईए और सीबीआई हो, सब ठीक है। जस्ट ऑन द फेस वैल्यू ट्रांसफर इटसेल्फ इज नॉट अ बिग इशू। क्या उसके बैकग्राउंड में वो देखना है, क्या आने वाला आने वाला क्या वीक हो रहा है, आने वाला एफर्ट क्या कम हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत बार रूटीन ट्रांसफर भी होता है, बहुत बार इंपॉर्टेंस कहीं होता है ज्यादा तो इसलिए भेजा जाता है, बहुत सारा इशू हो सकता है। तो बस ट्रांसफर कर देना ही खराब बात नहीं हो सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं, बट वो वी शुड नो व्हाई, एंड व्हाई इन द मिडिल ऑफ द व्हाई कोई नहीं बताएगा, पता नहीं चलेगा कभी भी किसी को। बट एटलीस्ट दिस व्हाटएवर इज वो जो फ्लो है इन्वेस्टिगेशन का वो कंटिन्यू रहेगा, तो एटलीस्ट वी विल बी लाइक वो नॉर्मल होगा ना। वो तो अभी खत्म नहीं हुआ, देखना होगा कैसा चल रहा है। बट ये न्यूज ऐसे आ रही है ना कि थोड़ा सा डाउट हो जाता है ना कॉमन लोगों को कि ये क्या है। कितना आदमी काम कर रहा है उसमें, हर आदमी को अगर ट्रेस करने लगेगा तो हर उसका एक्टिविटी डाउटफुल रहेगा। मेन होता है ब्रॉडर लाइन जो जा रहा है उधर सही जा रहा है कि नहीं। अब तो लोग एलियन थ्योरी छोड़ के सब थ्योरी दे चुका है, और उस पर भी जाके लोग कवर कर रहा है, तो हमको उसमें क्या बताना है। ऐसे ही डाइवर्ट होते जाता है हर जगह। सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट डाइवर्ट करने का कोशिश किया ही गया है। और एक मजे की बात है कि सब लोग उसके रिलेटिव थे पिछले जन्म में, सब लोग का कनेक्शन रिलेटिव आ रहा है। सब भाई, मतलब कितने भाई और बहन थे ये थे, कौन से जमाने के, कौरवों के जमाने के 100 भाई और 100 बहनें, पता नहीं, सब लोग रिलेटिव थे। तो कोई उसके गर्लफ्रेंड था, कोई बॉयफ्रेंड था, आई मीन आई डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग, बट सबका पास लाइफ कनेक्शन क्या है, सब लोग इतने जो 1000 लोग है उसके भाई बहन थे। ये कैसे पॉसिबल है मुझे पता नहीं है, लेकिन हो रहा है। वैसे कुछ भी हो सकता है। रीना बर्वे। Yes. Hello. Can you hear me? Yes. बोलिए ना। Let's finish it. Yeah. This you're talking about the transfer of the NIA personnel. I would like to add here that if you remember, in October or November, there was some CBI or NCB personnel who were intercepted, and they were transferred because they were trying to meddle with the case. Do you remember this, Varun? NCB में किसी का ट्रांसफर हो गया था। Yeah, so that is the policy that the government must be taking the measures on the quiet. और मिजोरम में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो maybe that is also a required degree of the personnel required in Mizoram, because Mizoram is trying to play foul against our country in connection to Rohingyas.
Yeah. You should keep yourself updated with all the Mizoram news. is worst affected by missionary activities. The indigenous Exactly. Hindu population has been driven away. Yeah. हाँ एग्जैक्टली तो वो नॉर्मल हो सकता है ट्रांसफर. आई एम नॉट सेइंग, आई वाज जस्ट Okay. वो न्यूज के ऊपर अटेंशन नहीं ड्रॉ ठीक है, करना चाहती डिस्कशन अच्छा है, ओपन. देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब कोई डिस्कशन होता है तो एंटी फॉर सब बात हो सकता है. हम देख क्या रहे एग्जैक्टली. हैं अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, पीपल कम एंड दे स्पीक, और कुछ अगर निगेटिव हो जाता है बात तो बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है, जो बहुत लोग नहीं हो रहा है यहाँ पे. जैसे लीना जी भी आती हैं, क्लियरली बात करती हैं, तो अच्छा बात है, इस तरह से क्लियरली बात करना चाहिए. मेन बात है सेंटिमेंटल हम लोग को नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खोज कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है हर चीज. ओपनली हम लोग ट्राई हाँ कर रहे हैं फाइंड करने का. किसी का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, कोई फास्ट हो सकता है, कोई पहले से कर रहा हो, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है. लेकिन ओपनली जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो फीलिंग पे नहीं चल के बात पे चलना है, कि बात हम लोग मेन सुशांत के लिए कर रहे हैं. ये नहीं सोचना है कि मेरे ऊपर कुछ बोल दिया गलत है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो चीज हमको पता है वो एक्चुअली हम लोग ना देखे हैं ना जानते हैं, सच में फर्स्ट पर्सन नहीं जानते हैं. हम लोग सुन के पढ़ के कहीं से बता रहे हैं. तो डिस्कशन किया जाए, इससे ये समझ में कि हाँ ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसा सही में दिखा था. हाँ जैसे सबको पता है कि पॉलिथीन में प्रूफ ले जा रहा था पुलिस, वो सबको दिखा है. तो इसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं क्या तरीका है, ये तो कॉम्प्रोमाइज ऐसा ही हो गया है. और डाउट्स क्लियर हो जाते हैं किसी के Correct. मन में, देखने वालों के भी मन में हो तो. Okay. और So, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक चीज के बहुत सारे एंगल होते हैं. अभी जैसे I वैभव think ने what कहा we कि ये नॉर्मल ट्रांसफर भी हो सकता है, बट वही हम लोग बात करेंगे तो वो निकल के आता है. सो इट्स गुड. एंड वरुण, तुमको मतलब तुम नए सिरे से वापस ये सब शुरू कर रहे हो. ये आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड डोंट फील बैड अबाउट एनीबडी हुएवर इज कमेंटिंग और कुछ भी तुम्हारे अगेंस्ट कर रहे हो. वी आर ऑल विथ यू एंड यू कंटिन्यू डूइंग योर गुड वर्क. हम लोग हैं साथ में. thank you so much. एक चीज हम बता दे सबको, ये बहुत बड़ा फाइट है, कोई छोटा मोटा बात नहीं, आप समझिए. रियल चीज है ये सब. यहाँ पे इंडिया का लोकल कार्टेल जो भी है, नेक्सस है, ये सब बहुत बड़ा पावरफुल है. तो आपको जो लग रहा है यहाँ पे जो भी फेस आपको दिखता है बस एक यूट्यूब चैनल है, तो ऐसा भी नहीं कि बस एक यूट्यूब चैनल है. जो फर्जीवाड़ा कर रहा है उसको पता है कि ओरिजिनल आदमी का नाम अवॉइड करके कुछ भी हम कॉन्स्पिरेसी कर दे, लोग का अट्रैक्शन आ जाए. हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भिड़ रहे हैं, कम से कम अपना तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट उसका नाम लेते हैं जो दिखता है. तो हो सकता है उन लोग क्रिमिनल भी हो सकता है, कुछ भी हो. तो थ्रेट परसेप्शन अलग अलग है दोनों जगह पे, रिसर्च अलग अलग जगह पे, हिम्मत अलग अलग चीज है. तो आपको समझना है, बोलने को ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा नाम लेना ही बहुत चीज होता है. सही आदमी का नाम लेना सही चीज होता है. इस सबके पीछे कौन है? शरद पवार आपको मिलेगा कथित रूप से, जितना चल रहा है. Okay. कंटिन्यू करेंगे. एक लास्ट वन लास्ट मिनट गाइस. आई रियली हैव टू गो नाउ. विकास जी आपने भी अभी ज्वाइन किया है. विल लेट यू स्पीक. मेरा ये लास्ट मिनट है. आप प्लीज इसके अंदर डिस्कशन मत करना यार. यस विकास जी प्लीज गो अहेड. आप म्यूट पे हैं. आप म्यूट हैं. सॉरी, मैंने बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किया है एक्चुअली. अभी मैंने ले भी लिया. कि एक मिशनरी की बात आई तो मैंने सोचा अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ. ठीक है, होम टाउन के बाद मैं अभी कलकत्ता में हूँ. ठीक है, अभी लॉकडाउन के चलते मैं घर पे आ गया, काम इधर हो रहा है ऐसे ही. ठीक है, गांव आ गया हूँ. तो जो मैंने अभी मिशनरीज का देखा यहाँ पे, मैं काफ़ी मॉर्निंग वॉक करता हूँ 15-20 किलोमीटर के आसपास, मतलब वीकेंड में. ठीक है, तो मैं ट्राइबल्स एरिया में मैंने विजिट किया, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया था अपने लाइफ में. ठीक है, एक चीज़ मॉडल मुझे समझ आया, जितने भी ट्राइबल्स हैं, अगर हम संथाल की बात करें, संथाल एक कास्ट होता है ट्राइबल्स में. ठीक है, वो ऑलमोस्ट सारे क्रिश्चियन बन गए हमारे एरिया के. ठीक है, और उसमें कॉम्बिनेशन क्या देखा मैंने यहाँ पे, ये ट्रेंड है, यहाँ से लेके आप कलकत्ता तक जाएंगे यही ट्रेंड मिलेगा आपको. वो एक्चुअली पहाड़ी एरिया में रहते हैं, गरीब होते हैं. ठीक है, उनके साथ साथ मुस्लिम बसे हुए हैं. ठीक है, अब इसका आप कनेक्शन लगा लीजिए, वो किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा है. ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारे उनके जो ज़मीन होते हैं या जो भी होते हैं, उनके रिसोर्सेज होते हैं, ये सारे यूटिलाइज कर रहे हैं ये लोग. ठीक है, अब इसको निगेटिव सेंस में ले सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में, जिसमें भी आपको लेना है ले सकते हैं, लेकिन यही ट्रेंड चल रहा है और ये काफ़ी इफेक्ट कर रहा है इन लोगों को. कुछ लोगों से मैंने बात भी किया, वहाँ जाके मैंने समझना चाहा कि क्यों ऐसा
क्यों हो रहा है। तो उनके पास गरीबी है, पढ़ाई का साधन नहीं है, तो मिशन स्कूल वो लोग ओपन कर देते हैं। मिशन स्कूल में उन लोगों का बहुत मिनिमम फीस में सारा खर्चा निकल जाता है। कॉलेज में भी वो उनको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं तो उनका कॉलेज हो जाता है, ठीक है। ये तो उनके पास एजुकेशन का कोई साधन नहीं है। तो मुझे लगा कि कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। यही सेम चीज जो है उड़ीसा में हो रहा है और वेस्ट बंगाल में क्रिश्चियनिटी वाला तो है ही, उसके साथ साथ में ये मुस्लिम वाला है जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है वेस्ट बंगाल को। इसका फंडिंग पूरा हिंदू के पैसा से हो रहा है इनडायरेक्टली। मे बी हो सकता है, ये हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। और पता नहीं, मैं अपने गांव का बताता हूँ कि सरस्वती पूजा होता है बिहार और झारखंड में सरस्वती पूजा होता है, ठीक है। तो जब लास्ट ईयर की बात है, जब हिंदुओं ने जुलूस निकाला और एक गली आती है जो मुस्लिम के साइड से जाती है वो गली, ठीक है। जब हाँ, ये जब मूर्ति लेके उधर घूम गए, मुस्लिम के साइड में घुस गए, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे रोक दिया, बोला नहीं आप इधर से जा नहीं सकते। अब वो एवरी ईयर्स मुस्लिम जो है वो तजिया लेके जाते हैं मुहर्रम के समय में, वो तजिया पूरा गांव में घूमता है, हिंदू भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये आज तक नहीं हुआ था, ब्राह्मण कभी उधर गया नहीं था एक्चुअली, ठीक है, या हिंदू जो भी हैं उधर कभी गए नहीं थे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि हिंदू उधर से चले गए, उन्होंने रोक दिया और ये बात इतनी बड़ी हो गई, ये थाना पहुंच गया और वहां पे सबको लिखा के लिया गया कि आप दोबारा से इस तरह का काम नहीं करेंगे। हिंदुओं को लिखाया गया है, मुस्लिमों को भी लिखाया गया है, लेकिन अभी मुस्लिम की बारी आई नहीं है। वो देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या करते हैं। अभी तक तो वो करते थे, ठीक है। तो इतना ज्यादा बैडली इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, बोलने वाला कोई नहीं है। कोई क्यों बोलेगा, सबको तो अपना डर लगा हुआ है। अगर सब कोई खड़ा नहीं होगा तो फिर कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा। सब हाँ, कोई एक साथ खड़ा होगा तब सब कोई खड़ा है। सब कोई अगर अपना आपस में लड़ रहा है तो लड़ते रहे सब कोई। अब किसको किसको बोला जाए, हिंदू ही नामधारी तो पूरा बैठा हुआ है जो सुशांत सिंह राजपूत का ही केस बर्बाद करने में है। सिंह मैं नाम अभी का ही एक आदमी ना है, कोई हाँ, राजपूत ही ना है जो अपना नाम लगाता है, सिंह लगाता है और बकवास करता है सुशांत सिंह राजपूत का है। तो हिंदू में तो अपना ही समझ में नहीं आ रहा है हिंदुओं की सिविलाइजेशन कहाँ जा रहा है। अपना छोटा मोटा लाभ के लिए तो लोग अपना पागल बना हुआ है। तो कैसे होगा आप बताइए ना। मतलब आपका बात हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात आप बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। नहीं, लोग समझना भी नहीं चाहते। अगर मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई अपने धर्म के बारे में बोलना, बुराई क्या है उसमें, हम अपने धर्म के बारे में सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, इसमें बुराई क्या है। अब हम लोगों का जो गांव है वहाँ का सेटअप ये है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम था, आज के टाइम में वो हाफ लगभग हो गया है, ठीक है। और अब उन लोगों को बोलने का मतलब लगता है कि अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो हिंदू कास्ट है वो अपनी खेती खुद से नहीं करता है, वो सारे मुस्लिम कर रहे हैं। दूसरा कास्ट आपको खेती के लिए मिलेगा ही नहीं, ठीक है, हिंदू करेगा ही नहीं खुद से खेती, ठीक है, सारे मुस्लिम हैं, आप उसके बिना आप चल नहीं सकते, ठीक है। तो उनको लगता है कि अब कुछ आप लोग बेकार हो गए हो, ठीक है, जो करना है हम ही करना है। हाँ, तो ये वाला कश्मीर में इसका एग्जाम्पल उन लोग दे चुका है ना, तो उन लोग का मन क्यों नहीं बढ़ेगा। यही तो काम उन लोग कश्मीर में किया। हाँ, उन लोग को लगता है कि पूरा भारत में होगा, हो ही रहा है, केरला में हो ही गया है, बंगाल में ऑलमोस्ट देखिए क्या हालत है। और दूसरा असम में चीज, देखिए, असम में ओपनली बोल रहा है कि मुस्लिम बना देंगे 2024 के बाद, ही कुछ बोल रहा था वहां का। किसी को मतलब नहीं है। ओपनली पॉलिटिशियन असम में थूक रहा था पानी बोतल में कैंपेन के दौरान। उन लोग को जो उन लोग का प्रैक्टिस होता है कि पानी में थूक के पीने से कुछ मिलता है उन लोगों को, कोई बोलने वाला नहीं है, इलेक्शन कमीशन वाला कुछ भी। कोविड के समय में वो थूक रहा है पानी में सबके, बरक्कत बरसा रहा है। उन लोग का जो भी होता है उस समझ में, पर ऐसा तो नहीं चल सकता है देश ना। तो प्रॉब्लम है, देश चलाएगा कौन। सबको तो अपना देखना है। मतलब 150 करोड़ अब होने जा रहा है आबादी ऑलमोस्ट इंडियंस का। किसी को कोई मतलब नहीं लगता। आप सही में बोल रहे हैं, पूरा सोसाइटी उठा के दीजिए, किसी को कोई मतलब नहीं है। और खासकर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इंडियंस का, हिंदुओं का, उसको तो रीढ़ का हड्डी कुछ नहीं है। उन लोगों को तो बोलना ही नहीं ना है। जैसे रिपोर्ट में हम कवर किए हैं अपने चैनल पे, 45 ट्रिलियन यूएसडी तो उठाया है खाली अंग्रेज लोग। अभी इस लाइव में भी शायद हम बात किए हैं, यूएस का 4 ट्रिलियन खाली ईयरली बजट है अभी लगभग। तो इतना तो लूट के ले गया है। इंडियंस को अभी समझ में नहीं आ रहा है, हिंदू को समझ में नहीं आ रहा है कि सुपर पावर थे तुम लोग, सबसे ज्यादा जीडीपी पैसा तुम लोग के पास क्यों हुआ करता था। और एकदम पागल की तरह एकदम बैठा हुआ है लोग। कौन बोले, एक मोदी बन गया पीएम, उसी के कारण सब कोई ताली बजाते रहता है, किसी को कुछ करना ही नहीं है।
अभी वेस्ट बंगाल में मैं अभी इलेक्शन चल रहा है इधर, अभी ये हालत है यहाँ पे कि मैं एक दिन बाइक लेके जाने वाला था, मैंने सोचा मैं घूम लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ मेरे छोटा ब्रदर रहता है तो उसके पास आया हूँ, मैंने सोचा थोड़ा घूम लेता हूँ बाइक से। तो वो बोलता है कि नहीं अभी आप नहीं जाना, इलेक्शन है उधर, दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आया कि दिक्कत किस तरह से हो जाएगी। फिर उसके बाद जब वो ऑफिस पुलिस से को आया तो मार दिया ना, एक पुलिस को, बिहार का एक पुलिस कांस्टेबल गया था तो बंगाल में मार दिया उनको घेर के, यही समुदाय हाँ। का लोग। हम्म। सो ऊपर जा चुका है। हम लोग और भी सेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं, सब बात हम लोग करते हैं डिटेल में। और विकास जी, मैं तो ये भी कहूंगा, नेक्स्ट जल्दी ही इसके बारे में एक टॉपिक बनाते हैं। आप जरूर कनेक्टेड रहें, मेरे जाएं, वैभव और के, मैं सब मैं ना मैं बात करके आपको आदिवासियों से फिर सुनाऊंगा, ठीक है, वो क्या बोलते हैं। ठीक बहुत है, मैं जाता रहता हूँ जब मॉर्निंग वॉक के लिए, तो बात करके आपको सुनाऊंगा कि किस तरह वो लोग सोच, मतलब इतने सीधे हैं कि आप उसको कुछ भी बोल देंगे ना। मतलब उसका बोलना ये था, उसने ये बोला कि एक पहाड़िया होता है प्रजाति, एक होती है संथाल। ठीक है, तो पहाड़िया ने मुझे बताया संथाल जो होते हैं वो, उनका कल्चर बहुत डाइवर्स कल्चर होता है। मतलब जैसे आप अंग्रेज का एक कल्चर लेंगे ना कि लिविंग होता है, वो लिविंग रिलेशन में रह लेते हैं, उसी तरह संथाल होते हैं। ठीक है, अब वो गरीब होते हैं। तो मुस्लिम क्या होती है, मुस्लिम कम्युनिटी का, इनका तो कोई भी काम कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, सबसे सब जगह बिजनेस उनका फैला हुआ है। तो ये क्या करते हैं, उनकी लड़कियों को ये प्रपोज करते हैं। ठीक है, और लिविंग रिलेशन में उनके साथ रहते हैं, घर तो इनका बसा हुआ है अपना खुद का। ठीक है, वो संथाल की लड़कियों के साथ, और एक लड़की के साथ नहीं, ज्यादा लड़कियों के साथ, तो मतलब ये उसने मुझे बताया लिटरली। हाँ, तो ठीक ये है, सब मैं तो मैस्कुलिनिटी का अभाव ना है। ये सब हिंदू कम्युनिटी में अगर मैस्कुलिनिटी कम हो गया है, मर्दानगी कम हो गया है, सबको भोपड़ी बजाना है, खाली हिंदू ही का मैरिज कंट्रोल करना है, तो सब प्रॉब्लम तो आएगा ही ना। 30-70 साल से जो जनरेशन का पड़ा हुआ है बेकार काम, उसको हम लोग तुरंत अभी कैसे चुटकी बजाते सॉल्व कर दें। और उसका सपोर्ट भी किसी का नहीं ना मिलता है। तो आपका ठीक है, आपका पीड़ा एकदम जस्टिफाइड, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि सब बात सुन के ना दिमाग घूम जाता है, क्योंकि सब तो रियलिटी है एकदम। इतना जनरेशन का जो कोड पड़ा हुआ है, हम लोग का जितना ही पूर्वज लोग थे, उन लोग को तो कुछ किया नहीं गया, आवाज उठाया नहीं गया। अपना सोशलिस्ट नेहरू का चप्पल चाटना था सबको, गांधी गांधी करना था सबको। यहाँ पे पूरा मीडिया बैठा हुआ है जो नक्सलवाड़ी का सपोर्ट करता है, उसकी बीवी का पति है दवायर का ओनर, और सबको दवायर का लिंक शेयर करना है, बहुत सोफिस्टिकेटेड आर्टिकल लगता है। तो किसको क्या समझाया जाए, सब लोग तो स्वार्थी बैठा हुआ है। किसी को मतलब है भारत में, किसी को कोई मतलब है, रोड पे मरा हुआ कोई मिले, कोई हेल्प करता है? सिंपल सा बात है, तो वो सब भूल जाइए। सिंपल सा बात है, टेक्निकल लीगली अगर हम लोग नहीं फ्रेम करना शुरू करेंगे ना बात को, लीगली हम लोग फ्रेम करके ठोस प्रहार नहीं करना शुरू करेंगे, तब तक इन लोग बात नहीं सुनने वाला है। और प्रोटेक्शन का राइट सबको, हम कितना बार बोलते हैं, कोई आता है मारने तो आप उसको मार सकते हैं जान से, अगर आपके जान पे खतरा है तो एक्शन हाँ। शुरू कीजिए। कब तक हम लोग ये प्ले करते रहेंगे कि कुछ नहीं कोई कर रहा है? कौन करेगा? हम उठाएंगे आवाज तो हम स्टार्ट करेंगे तब ना बोलेंगे। हम दूसरे से कब तक एक्सपेक्ट करेंगे? सब कुछ शुरू कीजिए, हाई टाइम हो चुका है। आपका एक लौता जो सिविलाइजेशन का छोटा वोट बाकी रह गया है, मैप, वो भी कोलैप्स करने वाला है बहुत जल्दी, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो। और ये तो जो इशू बता रहे हैं वो शायद आधा % भी असली रियलिटी का पिक्चर नहीं है, इससे ज्यादा इशू खराब है। तो फिर कौन बोलेगा? यहाँ पे तो फेमिनिस्ट लॉबी खाली हिंदू ही को ब्रेक करने के लिए लगा हुआ है। हाँ, बोल दो तो सबको पिनकी चढ़ने लगता है। किस किस सिविलाइजेशन इशू पे आप बात कीजिएगा? यूएस में फेमिनिज्म का उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, लोग पेपर में पेपर लिख रहा है यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में पेपर लिख रहा है लोग, इंग्लैंड में पेपर लिख रहा है, वहां पे बोल रहा है कि फेमिनिन बनना चाहिए, सबको थोड़ा सा हम्बल बनना चाहिए। और इंडिया में सोसाइटी तोड़ने पे लगा हुआ है लोग। क्यों इंडिया में खाली एक विशेष समुदाय का लोग 4 शादी कर सकता है, हिंदू नहीं कर सकता है? क्यों ऐसा है? नहीं, क्यों ऐसा, हमको इस बताए कोई। गलत है तो सबके लिए इस पे गलत है, मैं सही है तो सबके लिए सही है। सॉरी, मैं इस एक्चुअल पे लाइफ कुछ में एक कह किसी को पता नहीं है, एक्चुअल लाइफ में क्या चलता है किसी को पता नहीं, सोसाइटी कैसे काम करता है। ग्रोथ रेट निगेटिव के ऑलमोस्ट 0 माइनस में अभी चला जाए कुछ दिन में, 2 पे 2 चल रहा था, उससे भी कम डिक्लाइन कर रहा है हिंदू का। किसी को मतलब है, किसी को मतलब नहीं है। नेता होता है कोई मतलब नहीं, उन लोगों को तो वोटर इस हिंदू से कोई और बन जाएगा, उन लोगों को पावर में रहना है। उन लोग 2 सेकंड में दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा, वो भाजपा का हो चाहे किसी का हो। भाजपा का आधा बेस देख लीजिए, लव जिहाद बात करता है लोग, उनकी सब मैक्सिमम की क्या हुआ है घर में शादी, किसके समुदाय में हुआ है, देखिए जाके। ज्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे। तो इस तरह से नहीं होगा। आप लोग जो वीरता को एकदम मार दिए हो सोसाइटी में, इसके कारण ये सब हो रहा है।
सब कोई बोलता है करो करो, कौन करेगा? कोई खड़ा होता है, कोई साथ देता है उसका? आप लोग कभी देखिए कि आप लोग साथ देते हैं? आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, सही प्लेटफॉर्म को लाइक नहीं कीजिएगा, समर्थन नहीं कीजिएगा, कंट्रीब्यूट नहीं कीजिएगा, ऐसे ही खड़ा हो जाता है क्या? रिबेल न्यूज कनाडा में तो ऐसे ही खड़ा हो जाएगा इंडिया के लिए कोई? हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ पे वरुण जी कुछ कर रहे हैं सही काम, तो इनका कुछ नहीं है तो यूट्यूब पे लोग 4 बार आके बोलता है कि पैसा कमा रहे हो, तो भाई कैसे खड़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन? कैसे खड़ा होगा? दान दक्षिणा कहाँ से आएगा? फोकट में कहाँ से खड़ा कर दें? न कोई समर्थन मिलता है आर्थिक रूप से, न मॉरल रूप से, न किसी भी रूप से, तो क्या कोई चाहता है? क्या किया जाए फिर? ये सब रियलिटी अगली ट्रूथ है भारत का, समझना चाहिए लोगों को। सावरकर मर गए, यही भारत था ना कि ब्राह्मण का जेनोसाइड भी किया सावरकर के बाद, गॉडसे के बाद पूरा चित्पावन ब्राह्मण को ही मार दिया, ब्राह्मण का हिस्ट्री भी छुपा दिया, पूरा हिंदू का हिस्ट्री छुपा दिया। 30,000 ब्राह्मण मरे टीवीज के अटैक में, कोई आपको नहीं बताया? इस तरह कितना उदाहरण हुआ हर समुदाय का, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हर कम्युनिटी सेक्रीफाइस किया, कोई इतिहास आपको नहीं बताया गया। तो इतना बड़ा तो आपके ऊपर सिविलाइजेशनल बर्डन है, आप लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग गुलामों के संतान और वंशज अभी निकले हो आजाद होके। आपको इतना रियलाइजेशन ही नहीं कि आपके ऊपर शासन किया जाता था कुछ दिनों तक। इतना आपको रियलाइजेशन नहीं है तो कौन बोले? किंग प्रिंस फिलिप का रिप रिप सब कोई कर रहा है, किसी को शर्म है बेशर्मों को? कि क्वीन इलिजाबेथ में जो कोहिनूर डायमंड है वो भगवान जगन्नाथ का चढ़ाया हुआ वो मणि था, किसी को है शर्म? किसी को भी दुनिया में कोई भी जो हिंदू है, कोई भी अपने आप को इंडियन बोलता है, थोड़ा सा भी किसी को शर्म आता है? हाँ, जस्टिस का बात करता है इन लोग, फ्रांस में कुछ होता है पूरा दुनिया में हल्ला हो जाता है, पूरा इंडिया में हो जाता है। कमलेश तिवारी को मार दिया जाता है, कोई बोलता तक नहीं है। यहाँ पे यति नरसिंहानंद सरस्वती का पोस्टर लगाया जा रहा है, सीरिया बन गया इंडिया, इसका मतलब कोई भी किसी का गर्दन काट देगा, तमाशा चल रहा है। आप लोगों को शॉक ट्रीटमेंट का जरूरत है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा आपका सोसाइटी कहां जा रहा है। ओके सॉरी, मैं म्यूट पे था। इस टाइम पे ये सेशन बहुत सही जा रहा है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि इसको मैं डिस्टर्ब करता, बट आई थिंक हम आए आज खतरी के लिए थे। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है आई थिंक जिसके लिए एक डेडिकेटेड अपना अलग सेशन बनाएंगे। विकास जी, मैंने आपको नौसेन जी, आप प्राइवेट चैट में नंबर दे सकते हैं क्या? हाँ, मैंने भी दे दिया है, मैंने अपना भी दे दिया है, आप अपना भी दे दें वैभव। तो विकास जी प्लीज कनेक्ट हो, वुड लव टू जल्दी ही, बहुत जल्दी, कल या परसों में ही आपके साथ बैठ के ऑब्वियसली विल डू दिस डिस्कशन। नौसेन जी, गिव योर नंबर आल्सो इन द प्राइवेट चैट। ठीक है, तो आप प्राइवेट चैट में कर देना। ऑलराइट, आप म्यूट पे थे विकास, आप कुछ बोल रहे थे, बट आप प्लीज वहां नंबर दे देना। आई विल डेफिनेटली। हाँ जी, बोलिए। मैं बोल रहा था मैं दिन में बात नहीं कर पाऊंगा अगर वर्किंग डेज होगा तो, क्योंकि मैं दिन में ऑफिस में वीकेंड पे करेंगे, वीकेंड बिल्कुल। हाँ, तो वीकेंड में बात करते। सर एक छोटा सा बस बात बोलना चाहेंगे, बहुत मतलब आपको हम नहीं बोल रहे हैं विकास जी, हम आपका समझ रहे हैं लिमिटेशन सबका, हम एक जनरल बात बोल रहे हैं, आप अपने में मत लीजिएगा। यही प्रॉब्लम है, हम लोग लिमिटेड हैं, ऑफिस आवर से, इस आवर से, ये आवर से। जो जिहाद और जो सिविलाइजेशन पे अटैक हो रहा है वो 24/7 हो रहा है। ये सब मजबूरी समझिए और कैसे अडेप्ट करना है इसको निकालिए आप लोग। ये नहीं हो सकता। ऑफिस में भी आप जाते हैं तो एक विशेष समुदाय का प्रेयर रूम होता है, सब रूम होता है, छुट्टी मिलता है एक्स्ट्रा फालतू का, हिंदुओं का नहीं मिलता। ऐसा डिमांड कौन करेगा? ऑफिस से चेंज होगा। आपको ही पता है रियलिटी ऑफिस में क्या होता है। अगर एमएनसी में कोई काम कर रहा है तो बिना मतलब का छुट्टी जिसका नहीं है उसको छुट्टी मनाया जाता है, और हिंदू का छुट्टी नहीं मिलता है। प्रेयर रूम होना चाहिए। अगर अगर किसी एक विशेष समुदाय का प्रेयर मिलता है ऑफिस आवर्स में, तो हिंदू का भी टेम्पल हर ऑफिस में होना चाहिए। सिंपल सा बात है। ये सब इशू उठाना होगा तभी चेंज होगा। ओके, ऑलराइट, तो अभी मैं बस बोलें, बोलें प्लीज बोलें। I think we should invite people like Sanjay Dixit, Pushpendra Kulshresth, and this should enlighten us with more and more, change we need to bring about in the nation building. Okay, all right. ये हाँ, तो पुष्पेंद्र जी के साथ चल रहा है, he has been traveling अभी, तो इस वजह से हमारा जो लास्ट टाइम भी कमिटमेंट हुआ था वो नहीं हो पाया, बट जैसे ही वो सेटल हो जाएंगे, घर आ जाएंगे, वो सेशन हो जाएगा, विल डेफिनेटली हैपन, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बात है। और उसके बाद मिस्टर दीक्षित के साथ हम एक सेशन कर चुके हैं ऑन अ डिफरेंट शो। आई एम गोना इनवाइट हिम ऑन माय शो एज वेल वेरी सून, एंड Varun with Vaibhav Tiwari present. ओके जी, ठीक है। वैभव तिवारी तो
मैं उस टाइम पे जैसे ही फाइनल करूंगा तब उस टाइम पे आई विल डेफिनेटली इनवाइट एवरीवन। और Yeah, आरिफ सर को वैभव की बुलाया था, तस्वीर उनके साथ भी हुआ था। नेक्स्ट सेशन पे मैं एक बार फिर आरिफ भाई को बुलाऊंगा और वैभव को भी बुलाऊंगा साथ में, ताकि सब लोग साथ में रहें। ऑलराइट, आई एम गोना डेफिनेटली एंड दिस सेशन राइट नाउ। और मैं Yeah. एक लास्ट कमेंट लेने वाला हूं। प्लीज अब इसके बाद कोई डिस्कशन नहीं करेगा। नाउ आई एम गोना म्यूट एवरीवन। प्लीज गो अहेड। रेखा जी, आप कुछ शायद कहना चाहती हैं, एंड आई एम गोना म्यूट एवरीवन इंक्लूडिंग माय सेल्फ। Thanks, Varun. I didn't want to take this time. All I want to say is I never said get foreign agencies. लोग चैट पे कुछ कुछ लिख रहे हैं और यही होता है जब बीच में आप काट दिए जाते हो और आप अपनी पूरी बात नहीं बोल पाते हो. All I was saying is there are Indians all over the world who are willing to come and be a part of this journey, of this whole fight, and they're educated, smart Indians. So let's get their help as well, if needed, if required, and roar together. That's number one. Yeah. Number two, I'm a Rajput myself. I never get all these discussions, and I don't relate to it. But आज जो बातें हो रही हैं और मुझे ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब एक हिस्ट्री लेकर आ रहे हैं, और हम सब इससे जुड़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक पेन पॉइंट है, भी नहीं, and Rekha, your voice is getting cut again. Yeah, we can't hear you, Rekha. Yeah, we can't hear you. Yeah, maybe Rekha, आप chat में लिख दें. We can't hear you. It's completely gone now. Yeah. Okay. All right. So since we not काटे तो आप नहीं थे, इंटरनेट का इशू था इसीलिए उनका ड्रॉप हो रहा था। ये तो गलत बात है बोलना कि आप काट दिए। नहीं, मैंने नहीं काटा था। I understand what she is trying to say. So Rekha, I'll talk to you. Why? Okay. Who has joined? so Rekha. yeah. Yes, Rekha. So all I wanted to say, Varun, is in 95, at the age of 11, I lost my dad. Something very similar happened. No one went to jail. CBI couldn't help us. And I'm speaking today from a very, very vulnerable place, okay? I never talk about it. I don't come out in the open and discuss all this because I don't want to, because I don't know if it's going to help. But I really want this case to work out. So anybody who's sitting here and accusing me कि मैं foreign agencies बुलाना चाहती हूँ या मुझे अपने देश से प्यार नहीं है या किसी पे भरोसा नहीं है, please get into knowing a person before you comment and you question the person. You don't even know my journey. You don't even know what I've been through. Do you know and me? Varun, once again, No, do you know my journey? Varun, This is again, I'm very, talking very to you. weird. Do you know what I have been through? एक मिनट, I am not accused of you anything. Varun, I'm not talking about him. I'm talking the lady in the chat, about the lady in the chat. I'm No, not this is talking about weird. him. This So is once weird. again, You are he's trying to. taking offense for no नहीं, Please, reason. वैभव, madam, be chat में straight चल to रहा the था, point. वैभव। मैं We have उनकी बात ही sympathy नहीं with कर रही हूँ. everything you have been through. Please be direct Oh here. God, वही वैभव, this is chat में चल रहा very था यार। sad. मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था जिस वजह वैभव, से आपकी मैंने बात कहा। नहीं हो रही है. चैट पे हाँ। किसी ने लिखा है, मैं मैडम उनको आप जवाब दे रही यही हूँ. ना प्रॉब्लम है, यही हम बोले मैडम, वी ऑल रिस्पेक्ट एवरीवन's journey. There's lot of stories here. But you're not Please letting ignore anyone all speak, those things. You Ignore should all those take, things. no, I think you should take some suggestions. We are all here to speak. We are all here to express. Give us a chance as well. We feel as much about this as you do. Trust me. And I have full respect for you. आपने येल की बात की. मुझे पता है येल में किस तरीके का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, वो यूनिवर्सिटी कैसे बनी है, और आपने कई अच्छी बातें की. तो मैं बहुत अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आपको भी मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बीच में काट देते हो तो बाकी लोग आके चैट पे अजीब सी बोलिए चीजें ना, लिखने बोलिए, लगते हैं. नहीं काट रहा है मैडम, इंटरनेट आवर कट रहा था, नहीं, बोलिए। बिल्कुल. एंड वैभव, डोंट टेक मी अदरवाइज. आपके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है, वरुण के लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट है. आई एम श्योर वी ऑल हैव आवर जर्नीज. दैट्स व्हाट आई सेड. ऑल आई वांटेड टू से, मैंने फॉरेन एजेंसीज कभी मेंशन नहीं किया. भूपेश जी फॉरेनर नहीं है. जिनसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बात की थी वो भी एक इंडियन है. आप प्लीज वो शो देखिए अगर पॉसिबल हो, और अगर पॉसिबल हो उनको लाइए, वो खुद ही इस बारे में बात करेंगे. दैट्स इट. थैंक यू सो मच वरुण फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड सॉरी फॉर टेकिंग सो मच No, ठीक no, है no. मैडम, टाइम. एक सेकंड बस, एक पॉइंट हमको आप बता दीजिए। जी, आप बताइए. बुरा मान गई, हमको आप बताइए कि नहीं इंडिया नहीं, में आज बिल्कुल तक नहीं. आप एक केस का एग्जांपल बताइए जहां फॉरेन एजेंसी आके कुछ सॉल्व कर दिया भारत में। एक केस का पर एग्जांपल दे मैंने दीजिए। फॉरेन एजेंसी बोली ही नहीं, तो आप क्यों बार बार जा रहे हो फॉरेन एजेंसी फॉरेन पे? आप हेल्प बोलिए, जाके लाइव देखिएगा, तभी ना हम बोल रहे हैं। हमको आप नहीं एग्जांपल नहीं, दीजिए ना। आप बात ही नहीं समझ फिर रहे आप हैं. भूपेश जी ने. कन्फ्रंटेशनल ले रही हैं, हम एग्जांपल बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कोई केस प्रैक्टिकल वरुण, डिड नहीं यू है, ऐसा नहीं अंडरस्टैंड होता मी? है। या मैं बात करता हूँ इसके बारे में, आप अपनी इसको बात। गलत ओके, सेंसी में ले थैंक ली, यू. यही तो प्रॉब्लम या होता है ना, इसलिए तो हम आते नहीं लाइव में।
अच्छा, डायरेक्ट बोलो तो दिक्कत हो जाता है, लोग पर्सनली ले लेता है। वैभव, पहली हाँ, बात तो मैं इतना क्लैरिफाई, रेखा आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, और वैभव आपसे थैंक यू। रिलेटेड तो बात ही नहीं थी यहाँ पर। हुआ ये था, मैं चैट में ऑब्जर्व कर रहा था, बट सर मैं हम एक चीज क्लियरली बता दे, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ही घिनौना घटिया हो सकता है, घटा हो। प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोग Varun is not सेंटिमेंटल और nice to इमोशनल hear सब कोई all अपना this, ही हो गया He है। needs to listen to मैडम का others. बात नहीं है, प्रॉब्लम है कि हर बार कोई ना कोई लाइफ में आता है और सबको अपना पर्सनल ही रहता है इशू। हम जो बोलना चाह रहे हैं वो लोग नहीं समझता है। हम अभी जा रहे हैं, क्रॉस कर देते हैं तो हो जाएगा बात खत्म, उसमें क्या, हम क्यों आते हैं यहाँ पे। हम क्या इशू, हर बार हम ही क्यों इशू हो जाते हैं। हम मान लीजिए चार चीज गलत बोल दिए हैं तो इग्नोर कीजिए, वैभव आगे बात खत्म कीजिए वैभव ना। आपको कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, आप समझ ही नहीं रहे बात। आप एक अलग ही टैंजेंट पे जा रहे हैं जहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, Yeah. और आप उस चक्कर में ऐसी बातें बोल रहे देखिए हैं जो मैडम, बहुत मेरा एक हर्टफुल है। ही कमिटमेंट है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत से। जो भी हमको पता है, आपका भी जी है, बहुत बिल्कुल, लोगों का है, सबका है। बिल्कुल सब हम बोल लोगों रहे हैं का कि है। हमको जो गलत डायरेक्शन दिखेगा, आप बोल रही हैं सब ठीक है, फॉरेन का एजेंसी ने अब बोल रही है कि एनआरआई। कब ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई कमेटी बन के सक्सेसफुल हो गया और जिस तरह से मैंने आप। एनआरआई भी नहीं बोला, मैंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर की। अब आप उस चीज को अगर गलत समझेंगे तो मैडम, आप लोग 3 उसको बार एक ही बात स्नोबॉल करके बोलिएगा, पहले बोलिएगा वैभव इंटरनेशनल जी, रिपोर्ट है, फिर आपने एनआरआई। मुझे कई चीजें बता This दी, is not leading आपने to मुझे कुछ कई नहीं चीजें होने बता वाला है, दी। ये केस ऐसे ही डेड हो चुका है, हम क्लियरली बता देते हैं सबको। और इसी तरह से अगर रहेगा हम लोगों का तो नहीं हो सकता है। What is going on? I mean, नहीं, नहीं, honestly, Varun, very respectfully, I think we all need to listen to each other and not just talk. I know अभी Sorry about this, yeah. I didn't intend this. I had come to the show with No, a this lot is of. again wrong. You are giving a guilt trip to me. I have done nothing. You Okay, want your time. Varun, I'll आपका leave the इंटरनेट call. नहीं चल रहा था, Thank वो भी you, yeah. I'll मेरा ही catch up प्रॉब्लम था, later. हम Thank बंद you कर so दिया much. था गेस्ट को क्या। all right. दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। सर ये केस का Okay. कुछ नहीं होने वाला है, गलती हो गया, हम ये सब में करते हैं, कुछ ये सब केस का नहीं होगा इस तरह से। अब इसमें क्या बोला वैभव जाए, वैभव कोई क्या बोला जाए, वैभव इसमें हम क्या थोड़ा बोल सकते हैं। थोड़ा अब वैभव किसी कूल, का थोड़ा ट्रेजेडी हम कूल। क्या बोल सकते हैं, इसमें हम क्या करें बताइए। आप तो काटे नहीं नहीं, थे किसी का, आप तो किसी का लाइन नहीं काटे थे। वैभव एक मिनट पहले तो no, बात बात she's talking about somebody in the chat, not एग्जैक्टली you. आई एम सॉरी Vaibhav, मैडम, सुनिए हम उतने बेवकूफ नहीं है, 3 बार आके वो बोल रही हैं। पहले नहीं, नहीं, बोलती है वैभव इंटरनेशनल है, फिर फिर बोलती वही है बात एनआरआई, कर रहे फिर हैं इसी लाइन आप में अभी तुरंत बोलती हैं कि एनआरआई हम नहीं बोले हैं। अपना 3 बार कोई बात बदलेगा तो कैसे दिमाग काम करेगा। उन्होंने, वैभव सुनो तो सही भाई, मेरे भाई बात सुनो, थोड़ा ठंडे हो। उन्होंने सिंपल एक चीज बोली थी कि वो डॉक्टर भूपेश ने ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन डॉक्टर के साथ जो डॉक्टर नहीं, वो जो कौन से वो जो थे उनके साथ उन्होंने बात की थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, forensic जिन्होंने expert, हाँ। जिन्होंने ये कहा था कि हम लोग अपनी कॉस्ट पे आके हेल्प देने को तैयार हैं। ये थी उनकी सिर्फ स्टेटमेंट, उन्होंने मेरा कोई रिप्लाई था सर कि ऐसा आज तक भारत के इतिहास में कभी हुआ है। नहीं, नहीं, वो मैं समझ गया। आप ना आप टेक्निकल डिटेल में घुस गए वैभव। उनकी इंटेंशन पे आप समझें, वो इंटेंशन सिर्फ ये थी समझ गया, कि उन हमें इंटेंशन इस 100% केस अच्छा को था, किसी सपोर्ट का करते हैं, हम अच्छे कहाँ से कुछ बोल रहे रिजॉल्व हैं। कराए, जल्दी रिजॉल्व कराए, क्योंकि जैसे आप हो, जैसे मैं हूं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमें भी गुस्सा आता है कि इतना सर टाइम। जल्दी नहीं होने वाला है, किसी को भी अगर लग रहा है कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। या किसी को लग रहा है अगर ये तुरंत हो जाएगा, तो अगर आपके मन में पीड़ा है ना, तो बहुत लोग यहाँ पे तड़प रहा है डेली या कि कोई एक्सक्लूसिव यहाँ पे राइट किसी का नहीं, जैसे मेरा भी नहीं है। या हम 3 बार कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आके आप रिपीट करके कोई भी देखिएगा, हम इसीलिए नहीं बोलते इस तरह से। फर्स्ट टाइम बोले कि इंटरनेशनल हेल्प लेना चाहिए, फिर एनआरआई का, फिर उसी लाइन में बोलती है हम एनआरआई भी नहीं बोले हैं। तो या तो पॉइंट है तो स्टिक कीजिए, जस्ट फॉर द मेकिंग सेक ऑफ पॉइंट। कोई आता है सर, हमको पता चल जाता है क्या हो रहा है, हम सबका ट्रेजिडी से एग्री करते हैं, बहुत हम सिंपैथेटिक हैं, हम सिंपैथी ज्यादा एम्पैथी रखते हैं। ओके। बट इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से पॉइंट, या फिर बोल दीजिए कि सिर्फ ड्रामा चल रहा है सब जगह, बस हम लोग को बस बस ऐसे ही बैठना है शो में, जो भी जो बोल रहा है बोलते रहना, हाँ हाँ करते रहना है, या तो आगे बढ़ना है किसी पॉइंट से। ओके, अभी के हाँ, इस लिए बात से मैं एग्री करती हूँ कि मेरी इतने गलती थी। जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं, 1 सेकेंड, नहीं, नहीं, अब आई थिंक आई शुड ऑल्सो स्टार्ट। जब जब 2.5 घंटे का 2 घंटे का कट था, अब 3 घंटे 5 मिनट हो चुके हैं। आई थिंक एक तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो एक्सटेंड होता रहता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोना एंड इट। विकास जी, आपके पास होपफुली सबके नंबर आ चुके हैं, तो आप प्लीज कनेक्ट करना। एंड एक और हम एक जनरल टिप देना चाहते हैं सबको। हाँ, ये फोन होता है ना, इसमें कोई भी आपको हरास कर रहा हो, बुली कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो ना, ये फोन आप साइड में रख दीजिए, ऐसा करके कुछ नहीं होता है उससे।
बिना मतलब का इशू टाइप उठाइए, फोन उठाइए, साइड में रख दीजिए। कोई हरासमेंट कुछ नहीं होता है किसी का। चैट में क्या कर रहा है, क्या हम लोग का टाइम यहाँ पे आप लोग समझिए। अब मैडम आएंगी, फिर उनको पर्सनली लगेगा। जो भी लोग देख रहा है फ्यूचर में भी देखेगा। आप लोग एकदम आके यहाँ पे बात क्यों नहीं करते जो करना चाहिए उस तरह से। हम कोई गुरु नहीं है, या फिर हमको ये नहीं कि हम ही आइडियल है। हम बोल रहे हैं कि इस केस में जितना है डेडिकेशन हम लोग का, सबका होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप लोग को सामने देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। बात बनाएगा सबको, आके बात बना के चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही व्यूअर टाइम बस बढ़ेगा सबका, और कुछ नहीं होने वाला है। ऑलराइट, अभी आई एम गोना एंड इट, उसके बाद आराम से बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। एंड विकास जी प्लीज स्टे कनेक्टेड और मैसेज कर देना ताकि हम वीकेंड पे बात कर सकें। ऑलराइट, सबको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा है आज सबको। चैत्र प्रतिपदा। यस, वैभव, थैंक यू सो मच। वैभव, मेरा नंबर दिया हुआ है। हाँ, हम कर लेंगे। हाँ।